लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका रेड बुल प्ले 2 वर्सेस 2 CS गो इवेंट पे। मेरा नाम है कैप्टन प्राइस। आज मेरे साथ टेस्ट पे जुड़ रहे हैं एलिका, FTW एंड आप देख रहे हैं नेशनल फाइनल्स डे 1। Yes, Captain. Thank you for such a warm welcome. Yes, here we are. Everybody back together to that one old game that everybody looked out for, CSGO. Yes, and it's not only about CSGO, it's about all the OG players who are coming back in the action, who have been waiting for such a long time to make a reunion. And I guess this is the best possible opportunity that we have to bring down all our old friends together. How do you feel about Absolutely. it? There's no doubt about it. Like, we have so many popular faces. We can name a few of them for you if you guys like. Do you remember Deathmaker? Do you remember SK Rossi? Do you remember Ankit Pant? Well, all those people, they're going to come up today. And it's not just them. There are more names which we will take eventually. But yes, आज की शाम बहुत बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एंड ट्रस्ट मी लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आज आप देखने वाले हैं वो सिर्फ ये ओजी प्लेयर्स भी नहीं खेलने वाले हैं। चार क्वालिफायर्स के थ्रू देयर हैव बीन फोर क्वालिफायर्स फ्रॉम वेयर प्लेयर्स हैव ग्राइंडेड देयर वे थ्रू एंड कम अप टू दिस स्टेज। whoever wins the national finals, they get two AOC 144 hertz 1 millisecond response time monitors, and that's just amazing. I believe that's what I need Oh. for gaming. That will just make your game even more better. And Absolutely. performance is everything for a player. Oh. Upgrading peripherals, it's gonna put you at the best that you've got. Oh yes, and I believe today it's all about that nostalgia. Today it's Yeah, all we're about the gonna recollect. memories that we've had over, like, so many years of action. Those AK one taps, those AWP flicks. Like, what can we say? Those No Deagle one taps. scopes. Oh, the Of no course. scopes. Oh my God, who can Everybody forget the remembers no that. scopes? Exactly. Like, it's gonna be a great day and an afternoon that we have. Yes, I mean, one thing that nobody forgets about CSGO is, of course, Sukabliat. I remember that I was saying that a lot of times. And of course, CSGO has not only brought down esports into India, it also made so many families in esports. We have so many organizations, so many rosters, so much young talent upcoming, and it hasn't just stopped yet. Even after the arrival of new games, it will keep growing as we get tournaments like Red Bull, Flakes, who they are going to encourage a lot of young talent who will be representing our nation in the global if they get through these qualifiers in India. Oh, well. Representing our nation, I believe that's something which many esports players dream of. And honestly बताने के लिए, like, मैं एक चीज यहाँ पे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि जो भी प्लेयर्स आज खेलने वाले, जो भी प्लेयर्स खेल रहे, नॉट द ओजी प्लेयर्स, नॉट द लेजेंड्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक द प्लेयर्स जो क्वालिफाई करके आज की शाम खेलने वाले हमारे सामने आज, वेल, क्वार्टर फाइनल्स में देखेंगे। देयर विल बी 4 मैचेस दैट वी गेट टू सी। 2 मैचेस आपके सामने यहाँ पे दिखाया जाएगा, 2 मैचेस यहाँ पे ऑफलाइन कंटिन्यू किए जाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप लोग। वो मैचेस आपको जरूर देखने का मौका मिलेगा। बट आई बिलीव सबसे ज्यादा जो मजेदार आज चीज हम देखने वाले हैं, द मोस्ट fun part that we're going to see is the 2 versus 2 game mode. I believe Red Bull integrating with CS and creating this new game mode, this new maps, like you can already see it on our screens how it's going to be for the entire show. So yes, kood ke aana and just getting those one taps, some flicks, and it's going to be it's going to be a fun show, I believe. Imagine having the best one beside you and it's a 2v2. You can take down the entire world if you have that deadly duo. So this is a game that's not only, titled as the champions for the 2v2, it's also going to be called as deadly duo, I believe. I mean, of course, the entire audience is going to believe that one duo going to be representing our nation. And it's just not about the players. It comes down to that emotional feeling that we all had for FPS games. It's going to bring back a lot of memories for us, and for bringing back a lot of memories, we have the OGs reunited with us. We're going to be talking with us. We're going to be asking questions. And I'm pretty sure that every one of the content creators we have, every one of the OGs that we're going to play today, they'll be very happy to come back to this game. वेल, आई बिलीव वी विल एक्सप्लेन टू दी ऑडियंस कैसे ये मैप्स खेले जाते हैं, ये गेम मोड कैसे फॉलो किया जाएगा, फॉर्मेट क्या रहने वाला है आज की शाम, एंड कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो एक्चुअली में खेल रहे हैं, बोथ जो क्वालिफाई करके आए हैं एंड बोथ जो ओजी रियूनाइट मैचेस होने वाले। तो ओजी रियूनाइट मैचेस में आज की शाम आपको 4 मैचेस देखने का मौका मिलेगा। कल शाम को कल दोपहर 2 बजे मैं कहना चाहूंगा आपको सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स भी देखने का मौका मिलेगा, जब आपके सामने यहाँ पे नाम आते हैं ना कि कौन कौन से प्लेयर्स साथ में खेल रहे हैं। मे बी कुछ दोस्त खेल रहे हैं, मे बी इन गेम राइवल्स खेल रहे हैं। तो आई बिलीव आज जो राइवलरी प्लस कंपटीशन हमें देखने का मौका मिलेगा, बिकॉज़ इट्स सीएस, देयर हैज टू बी कंपटीशन व्हेन देयर इज सीएस कमिंग ऑन स्टेज फॉर अस। काफी सारे स्ट्रीमर्स भी है, काफी सारे कम्युनिटी स्ट्रीमर्स खेल रहे हैं, काफी सारे पॉपुलर, एंड इट्स जस्ट नॉट
only players. We also have a lot of female gamers who are coming out there. Oh yes. We have a lot of special guests we have today, I guess, in the OG, where everybody will be so surprised to have her as well in the game. So I'm pretty sure that you guys will be surprised who are the OGs that are playing and who got qualified as well. I believe the people and the players who have qualified come down to the quarter finale of this main event are also putting out their 100% to get down into the global. आई बिलीव यहाँ पे दर्शकों के लिए मैं एक छोटा सा टास्क देना चाहूंगा, 2 टास्क एक्चुअली मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप अगर अभी आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एंड डेफिनेटली अगर आप ऐसे ही और इवेंट्स एंजॉय करना चाहते हैं तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, स्काई स्पोर्ट्स गेमिंग को। दूसरी बात यहाँ पे मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप लोग प्रेडिक्ट कीजिए कि कौन कौन से प्लेयर्स आज खेलने वाले हैं, आपके फेवरेट चहेते प्लेयर्स आज खेलेंगे कि नहीं, वो भी बताना बिल्कुल ना भूले। एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द गेम मोड, लाइक हमें पता है कि इट्स अ 2 वर्सेस 2 गेम मोड। टोटल 5 मैप्स हमें देखने का मौका मिलेगा, उसमें से जो ओजी रियूनाइट मैप्स होंगे वो ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड है, लेकिन जो मैप्स हमें देखने का मौका मिलेगा फ्लिक के इवेंट में, देयर इट्स गोइंग टू बी अ मैप वीटो। 3 मैप्स यहाँ पे चूज किया जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, जो आप देख रहे हैं ना हमारे सामने, यहाँ पे हमारे पीछे चल रहे हैं स्क्रीन में कि ऐसे उछल कूद, यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट मी। आप लोग थोड़ा सा पॉपकॉर्न एंड कॉफी लेके बैठ जाइए, बिकॉज जो एक्शन आपको देखने का मौका मिलेगा, इट इज गोना स्टिक यू डाउन टू योर चेयर्स। मुझे तो कॉफी से ज्यादा रेड बुल की जरूरत है, बिकॉज काफी इंटेंस इवेंट होने Oh, वाला yes. है। इंटेंस से ज्यादा तो काफी इंटेंस प्लेयर्स को देखने मिलेगा, इंटेंस प्लेस देखने को मिलेगा। सो आई एम प्रीटी श्योर दैट यू गाइस शुड ग्रैब अ कैन ऑफ रेड बुल एंड गेट योरसेल्फ एनर्जाइज्ड फॉर अ लॉन्ग डे ऑफ इवेंट, जहाँ पे हम 2 इवेंट्स करने वाले हैं। एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द OGs, we also knew that 2 of the games of the quarter finale will be played offline. So if you want to know the scores, then I insist you should go ahead and follow Sky Sports on Instagram, because जो भी results होंगे हम Sky Sports के Instagram में back and post कर देंगे, so that you guys have a clear idea who will be going down to the semi finale, which will be happening tomorrow, I feel. एब्सोल्युटली। एंड अगर आप गेम मोड की बात करेंगे, हमने ऑलरेडी बता दिया है कि इट्स गोइंग टू बी अ 2 वर्सेस 2 गेम मोड। बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला हमें देखने का मौका मिलेगा क्वार्टर फाइनल्स में। एंड व्हाट्स द फन पार्ट, एवरी बेस्ट ऑफ 3 आल्सो हैज अनदर बेस्ट ऑफ 3 गोइंग इन बिटवीन देम। लाइक एक मैप अगर आप खेल रहे हैं, आपको वहां पे 3 में से 2 बार आपको जीतना पड़ेगा, एंड whoever gets to the first 2 wins, he is or they are the winners of that particular set। and ये सिर्फ एक बार नहीं, आपको एटलीस्ट 2 बार करना पड़ेगा। so yeah, it's a best of 3 in a best of 3, that's around 9 rounds overall if you play all the rounds, but I believe players खेलना चाहेंगे 9 rounds, because after all it's CS, right? कौन नहीं चाहेगा यहाँ पे थोड़ा सा फ्लिक करके दिखा। and believe me, qualifiers में जो मैम ने देखा है, जो what I have seen basically, आप कहना चाहेंगे कि जो मैंने देखा है यहाँ पे क्वालिफायर्स में, that has been such amazing। नए नए प्लेयर्स आ रहे थे, पुराने प्लेयर्स भी थे डेफिनेटली, एंड इट्स इज जस्ट सो अमेजिंग टू सी कि अभी भी इतना ज्यादा मोमेंटम बना हुआ है सीएस के लिए। काफी सारे अंडरडॉग्स अभी भी है, एंड आई गेस ये एक अच्छा मौका है जो अंडरडॉग्स ऑलवेज जो प्रूव करना चाहते थे सीएस में। इट्स नॉट टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। सो आई गेस ये अपॉर्चुनिटी काफी बड़ा हो सकता है उनके लिए, जो ऑलवेज सीएस में अपना दिल लगा के खेलते थे। आई एम प्रीटी श्योर जो भी सीएस खेलते थे अपना दिल मन सब लगा के खेलते थे। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल गेम, एंड इट इज स्टिल इज। वेल कुछ फनी मोमेंट्स मुझे यहाँ पे याद आ रहे हैं। लाइक अगर गुस्सा हो जाते थे प्लेयर्स तो यस, हमें पता है माउस तोड़ा जाता था एंड कीबोर्ड्स तोड़े जाते थे, एंड देन इफ यू मिस लाइक सिंपल शॉट वहां पर पंच द मॉनिटर्स, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स रह चुके हैं। तो आज वो आपको बिल्कुल देखने का मौका नहीं मिलेगा। नीदर एम आई नॉर इज शी गोना पंच एनीथिंग अराउंड हियर, बट जोक्स अपार्ट टुनाइट, this evening it's going to be amazing, because जो 8 प्लेयर्स आ रहे हैं उनके नाम थोड़ी टाइम बाद आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग बताते रहिए चैट में कि कौन आने वाले हैं। वेल आई हैव टोल्ड यू अ फ्यू नेम्स कि रॉसी आने वाले हैं, देयर इज गोइंग टू बी वेनम डेफिनेटली कमिंग इन, देयर इज गोइंग टू बी डेथ मेकर, बट और कौन खिलाड़ी हो सकते हैं जो ऐसे ओजी मैचेस खेलने के लिए आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली फीमेल गेमर्स भी है, द गर्ल गेमर्स, द वुमेन आर गोना आल्सो पॉप अप द हेड्स टुडे। सो आप बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फीमेल गेमर्स हैं जो CS:GO में अपना जलवा पहले दिखाए हैं। हाँ, आई मीन फीमेल प्लेयर्स तो मैं तो एक्सपेक्ट कर चुकी हूँ, मेरे दिमाग में ऑलरेडी नाम आ चुका है। मैं थोड़ा भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि आज का इवेंट काफी अच्छा जाए, एंड आई फील लाइक it's going to be a lot bigger than what I expected it to be, and of course it's going to be the strongest day for everyone. Well, talking about CS, let's pick our best weapon. So which was your favorite weapon in the game? AWP, of course.
Dude, AWP's accuracy is so good and मुझे scope वाले of course like you know scope वाले guns मुझे काफी पसंद आते थे and after AWP I would say scout because मैं main opper हूँ and when I pick scout is very lightweight so you can easily recoil काफी आराम से तुम reload कर सकते हो so switch करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है secondary weapon को and I guess op has very good accuracy even with the no scopes तो इसलिए मैं AWP prefer करती हूँ उसके अलावा तो deagle of course I have seen a lot of teams winning out those eco rounds with deagle so deagle can be that one powerful pistol which can change everything for the team's economy and their score. Absolutely, I believe AWP ऐसा weapon है, if you have the economy, you can go out for double ops as well. But आज सिर्फ दो ही खिलाड़ी हैं, तो देखते हैं क्या हमें आज दोनों प्लेयर्स ऑपिंग करते हुए दिखने वाले हैं या फिर दोनों प्लेयर्स यहाँ पे अपने यूएसपीज एंड ईगल्स के साथ आना चाहेंगे. वेल, पर्सनली स्पीकिंग, फेवरेट मैप, तन्वी, गो फॉर इट. Mirage, of course. Mirage is I guess 80% of the CS players would prefer to pick Mirage. After that D2, of course, the default map of CS:GO that everybody has started down playing. And I love Dust too. Who doesn't, man? I think Dust is a name जो CS 1.6 से चलता आ रहा है, and Dust too, it just brings it's in the second all version. Yeah, exactly. It's like a more upgraded version of CS, but yeah, it's a CS:GO event, so Dust 2 will be my personal favorite. आप लोग भी बता सकते हैं कि आपका personal favorite map कौन सा है? Which weapon do you prefer? Well, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि which weapon I prefer, I think opping अगर आपको अच्छी नहीं आती है, you can go for an AK, you can go for a Galil, you can go for an M4. Like M4, come on, like we can't forget M4, right? कितना ज़्यादा हमने देखा M4 के usage and that's just amazing कि आज भी हमें M4 देखने का मौका मिलता है and players just rip those heads off like यार कोई रोकिए उनको. आज भी मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को जो गेम मोड्स होंगे, आपका डिफॉल्ट वेपन डेफिनेटली एक पिस्टल रहने वाला है, whether it's going to be your Glock, whether it's going to be your P22. उसके साथ साथ यहाँ पे there will be spawn points of particular weapons. वहाँ पे spawn points रहने वाले हैं आपके weapons के लिए. Every individual weapon has a spawn point, be it FAMAS, be it AK, be it Galil, be it M4, वो आपके सामने रहने वाले. उसी के साथ साथ you will be having health shot spawn points as well. Imagine आप बस spawn point के आसपास you're just roaming around, you're getting hit, you're getting damaged, you get another health shot, just inject it in yourself and you're just fully healed up. Well, उसके साथ साथ you will be having spawn points for your incendiary molotovs, flashbangs, etc. And that is just amazing. Yes, it's more than amazing, I guess. And speaking about all the guns we've told, I think SMGs are the OG guns as well in CS:GO. I mean, they are mostly used when your economy is not in the right hands. SMGs are the way to go. I think most of them do when we have force fire rounds. SMGs like for Mars is very popular. Mac-10, oh my god. When you win the pistol round, when you go down to the second round, I've seen so many people just rush blindly with the Mac-10. Exactly. It has the best accuracy in the recoil, which, adds the beauty into the game, I guess. Well, if you are a bit cheeky about me, after winning the pistol round, maybe you like to hold down a corner. It's shotgun. No, if I was on the terrorist side, I would just pick up a Mac-10 and would blindly rush. Oh yeah, that is one way to play it. But if you are like me, you can just pick up a shotgun and maybe go for Mac-7. Yeah, Mac-7 maybe preferably. You can see some single shot, maybe some I'd like to say shotguns are something which can really annoy your opponents. Like you're going in, maybe you're trying to just connect one tap of that AK and you just get blasted in the face. How one shotgun I loved was Nova. I think Nova in the old days it was very, very popular, but Mac-10 and Mac-7, these two weapons, these are of course two different class of weapons, but still nowadays these weapons, they are just I don't know how to say this, but it's basically like you are owning with whatever you can flip it. And the OG Unite players, when they actually come up on our desk, I think it's going to be a fun time to chat with them. Oh, I just recall something that the OG Reunite players, they're going to also come up for the interview. So in case you have any questions for them in mind, be ready with those questions. Yes, of course. I'm excited to interview all the OG players though. Well, I think everyone is excited to know as to who the OG players are, and we're just waiting for the next segment of this afternoon. That's going to be the interview. We're going to start off with the interviews in a short while, and after that we're going to move into the matches. There's going to be a lot of chit chat with players. There may be chit chat with the winners as well. So yeah, it's going to be a fun day to watch. Get your popcorns and get your coffees ready. Get your Red Bulls ready if you are like us, like enjoying the Red Bull. If you need that energy pumping through your veins, get all those things ready because it's going to be a beautiful afternoon that we have.
Well, I'd say that Yes. it's time to address the elephant in the Yes. house. I Let's guess call that's up. right. Yeah, I think he is here. So let's move on. Let's welcome the one and only Ankit Pant, aka Venom. What's up? How are you doing? I am doing good. How are you guys? Well, we are just waiting for these players to come in, and we are of course waiting for you to come in and show those skills on an insane level. Ah, it feels so good to I, see back my old hero, Ankit Pant, who I used to adore so much. I was thank you. such a Thank you big so much. fan of him. But yeah, back. Welcome back to CSGO. How does it feel to be back at your heart, where your heart belonged to? I still believe it does. It feels good. I am looking forward to the event. Last time we played, it was uh, too much fun, and this time also, I am assuming that we'll enjoy because all the pro players, some of the best players that India has, are going to play together in this tournament. That's going to be interesting. Well, how does it feel to be like, here competing against all those professional players? And of course, we know what you're going to do because last time I remember when you came in for the frag out event, you were completely dominating. So, any plans of those things getting repeated? Today's plan is to just enjoy the game and try to win as many matches as we can. Mm-hmm. And let's see, man. I'm looking forward to the national finals. To be honest, I want to see uh, Ooh, who's going to take this home, who's going to take the trophy. That's seems interesting. great. Yeah. Well, any message you have for the champs who are come in and perform in front of us today? Sorry, I missed that. Okay, so anything you want to say to the players who are going to perform? There's going to be 8 quarterfinals, if I'm not mistaken, there. So, any message you have for those players? I just want to say, play confidently. This is a great event. At our time, when we used to play 1.6, we didn't have such events, and now you have the platform. I'm sure you have the skills. That's the reason you are there in the national finals. So play confidently and give your best. We all guys are rooting for you, and let's see who takes the trophy home. Yeah, looks like Ankit is more than excited from all of us regarding that last final event, national finals. The two wingman who Oh, are yes. gonna bring this up to themselves. So I have one last question for you, Ankit. What was your reaction when we announced regarding the OG players? When we told that we have a event with all the old players from CS called the professional. I suppose you have a lot of friends in CS. Yeah, it's good to see them come back to CS:GO for some time because most of us have shifted to Valorant now. But CS:GO will always be in our heart here. It gave us everything. At least my journey started from Counter Strike, and that's the reason Red Bull Flick and Red Bull Frag Out are very special to me. And I'm looking forward to play against these guys whom we used to compete in tournaments, go to the LAN finals, be there on stage, play CS:GO, fans cheering, all that. Now due to COVID, due to the pandemic, obviously we can't go to the LANs, but these events bring back those memories. So it's really nice to be here and be a part of this Red Bull Flick. Well, I believe everyone is very eager, waiting for the matches to begin, as are you, as are we. Well, we won't keep you awaited any longer. Thank you so much for joining us here on the desk. And, well, we are Thank going to you. be seeing you again after the show. So, all the best, of course, because you're going to be also there playing with your friends, playing against your friends. So, all the best for that. And we'll be seeing you Thank you. again after the show's done. Sure. Thank you. Thank you, thank you so much. And well, talking about today's show. Well, you already see that I think Ankit is way more excited than Yeah, us here. the first question answer was, I'm looking forward for the national finals. And I was so impressed and surprised at the same time. I thought, he must be having fun playing in the OG group, but he's also serious and still professional. He has that place and heart for CSGO. He's still waiting for that finals, and everybody is, to find out that we need to get it down to all the stages, quarterfinale, semi-finale, and the finale will be happening tomorrow night. So if you don't want to miss that, guys, you know what to do. Hit the subscribe button, turn on the notification bell, and follow us on our Instagram to not miss any of the updates.
Absolutely, and we are gonna get started off with letting our audience know of the brackets, who the players are gonna play, कौन कौन खेलने वाले हैं, and कौन कौन से प्रोफेशनल प्लेयर्स डेफिनेटली खेलने वाले हैं. अंकित जी ने ऑलरेडी बता दिया है कि उनके कुछ दोस्त खेल रहे हैं, तो आई थिंक ऑलरेडी दो दर्शकों ने गेस करना चालू कर दिया है कि यस हु आर गोना बी द प्लेयर्स. वेल, चलिए आपको एक हिंट देते हैं यहाँ पे, लाइक दी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया वंस अपॉन अ टाइम इज आल्सो गोना प्ले here on stage. One of the players in India right now are also going to play, and this is all going to happen this afternoon. तो कहीं मत जाइए, एकदम बैठ जाइए, एकदम कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, because it's going to be just going bonkers around here. Well, I think एक और चीज हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, like बहुत इंतजार हो गया है. चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ. तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द मैप्स. ये है हमारे 5 मैच जो खेलने वाले हैं. आप देख सकते हैं साइबर्स फेस होने का वो बहुत सारे देखने वाले हैं. देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू टेक केयर ऑफ. आप देख सकते हैं हर एक मैप में यहाँ पे हर एक स्टाइल रहने वाला है. देयर इज गोइंग टू बी डिफरेंट वेपन्स दैट यू स्टार्ट ऑफ विद. इस मैप पे पर्टिकुलरली यू स्टार्ट ऑफ विद द यूएसपीज, एंड आई थिंक वेपन अपग्रेड करना उतना आसान नहीं होने वाला है, because there will be players waiting for you at those spawn points, and you need to hold down those key locations as well, because the moment you lose that location, your tickets go down, and once your ticket hits 0, you lose that round. Yes, even also when you get a kill onto the enemy, you get the points added, and I guess that this is the reason why the event has been named as Flicks, because I'm looking forward for a lot of flicks and op shots. But to begin with, we'll be beginning with pistols, of course, and then we will be upgrading to SMGs. And when it comes down to a proper, close overtime match, then we might be seeing the real guns come out. And fragging out and capturing an area with pistols can be quite hard sometimes. But yeah, it depends on how good of a mindset you are putting in through here. Well, I can say that let's move on to the second map. Yeah, the second map. Actually, let's move on to the second map. Yeah, let's move on to the second map, and this is going to be the central room. And as you can see, this room. Well, I have seen so many highlights of this map getting played. Like, trust me, I believe we are going to see this map in all of the quarterfinals that we have of the Flick event. As you can see, it's going to be control room. It's going to be level 1, and it's going to be a great map as well, because you can just jump around, you can run around, you can just slide over those railings and get to the domination points, hold it down, get some more kills. Well, I don't think it's never enough if you don't get those kills. So yeah, I'm really looking forward to those number of frags as well. I've also heard that it's one of the toughest maps that we have in today's map pool, so I'm looking forward for more maps to be on the third map also. There are 6 maps in total, if I'm not wrong, into the map pool, and I'm looking forward for the third one because it might be quite an interesting one, and that is the digital archives. It's more like a server room, and this is a very dangerous map. You can fall down, you can die, without even your conscious when you're trying to make a move from one place to another. And in the weapons, you'll be, of course, starting with the pistols. When it comes down to the core, you might be getting into the real guns, the real rifles of AK, or maybe a op can be seen. But in a very rare cases, as the map is too huge and scoping would be very difficult in such kind of maps. The most used weapon I'd like to see in all of the matches, like I have seen the highlights, of course, of the qualifiers of the group stages, and honestly speaking, the most used weapon has been FAMAS. Like it hasn't been a very favorite weapon, we know, but still, FAMAS has been so very predominant in the game. Like maybe you have a little bit of a damaged economy, I'd like to say. FAMAS is the weapon which you'd like to go through. Yeah, I love FAMAS, man. I mean, the name itself depicts famous. Spelled in, spelled in other way, FAMAS. That's something that we are really excited to. Well, as we already know, there are overall 5 maps. The overviews are going to come through. We have already seen 3 maps. The next map is going to come up on our screens in a short while. Well, there it is, map number 4. It's going to be Sky Platform. I'm expecting a lot of flying around on this map. Well, you are going to get dizzy on this map here. So, get ready for some flying action. Players are going to just fly around and drop down. P250 is going to be the weapon which you're going to start off with. There's going to be a stim shot definitely there to assist you with the winning of this particular map here. And what's more interesting about this map? That we have jump pads. You can jump from a place to another, and I guess that's the reason why the name of the map is associated with Sky Platform. So there are going to be a lot of jump arounds and B hops. I guess everybody remembers, right? B hops.
how we used to, get the game a little more tricky with our reaction time. Well, I guess it's time for the fifth map, Well, let's the move on to last the map, final map. Yeah, the exactly. interesting Let's map. move. What's the Mhm. level is my question, and it's going to be Wing Orbital Station. Oh, looks like the interiors are going to be a little difficult for the teams to, pitch in out and tackle the other team. Well, it's the level 2. Okay, interesting. And we have teleporters over here. Oh yes, yes, that's a very very interesting factor you can say we have in this particular map. One more thing, you were talking about the scout, you were talking about the op, right? Yes. Trust me, you're gonna get a lot of op and scout action is in this particular map here. Yeah. The only reason being there are such tricky corners to hold down. Players will be just waiting for you with those ops, with those scouts, and you're just gonna get popped off. Yeah, I mean, when you have scoped weapons with you, when you have such kind of rifles in your hands, it gets the game easily. And but with the teleporters coming in, I guess it adds addition. It adds more more intense to the map and the game. Well, let's not keep our audience waiting any Yes. further. Let's move on to the brackets of this afternoon, and the brackets are gonna tell us clearly as to who the OG players are. Well, the first Ooh. round, well, this is I believe going to be really really off the charts here. Excali and Sai, the two dynamic brothers playing here. Yes, Excalibur inside the deadly duo we've been seeing. They've been popping up in a lot of FPS games. The old friends, the deadly duo, have a lot of names for them. Looks like they're gonna be putting out some action against Team Scrum. Sorry, it's Team SKRDM. My bad. I'm looking forward for the players of Team SKRDM because I don't know the players. And moving on, we have Powermix versus Team Antidote. Now, Antidote, one of the best offers in the country previously in CSGO, he might be shaking off the entire scene in the last map. I don't know, like Antidote is there, there's Deathmaker as well, there's Rossi as well, and I believe these three players, if they come face to face, it's going to be really, really interesting. And we have two players in the next set here. That's going to be Kappa Kappa. and Hellfighter. Well, they do belong to two different orgs, and still they are playing together. This shows you the Oh, friendship, the level of friendship that they have, playing together, and who they are going to play against. Well, it's none other than Team Venom, Venom. and this I believe it's going to be a very very interesting show. And who's going to play along with Venom? Any ideas Yes, about that? I do. It's going to be the very young boy who made his way through CS and came down as a big star in the country, and that is Rexy, of course, I believe. And Rexy, Absolutely. he has been a very, he's been that one player who hits a lot of naughty shots, who gets down the headshots very quickly. And same goes for Hellfighter. He's been a very young talent. He's been playing CS like when he was 15 or something. He started playing tournaments, and I'm very excited as we move on to the last two teams, Team Duo versus Scamish. Now, both of I don't have an idea who are going to be the players. And Captain, do you know? Can I get some insider information, sir? Well, I have a lot of insider information, but I believe some information are best withheld until the match comes. So yes, Team Blue versus Scamish, it is I'd like to say it's a very very interesting match that we're gonna have. But let's keep some surprises. We're gonna tell you eventually as we move on through the rounds. And as you can see in the brackets, it's going to be a very clear cut format getting followed. We have four quarterfinals happening today of the OG Reunite. As you can see, whoever wins in each event moves on to the next one as in form of the semi-finals, which are going to be happening tomorrow afternoon 2 p.m. onwards, and उसके बाद there's going to be the finals there. And उसमें तो like आप कह सकते हैं कि after a lot of practice for the quarterfinals, semi-finals, finals, ये बहुत बहुत ज़्यादा competitive होने वाला है. वो सस्पेंस तो आपने मेरे लिए भी छोड़ दिया है लास्ट हाँ टीम का. हाँ. तो अभी मुझे भी वेट करना पड़ेगा पूरा इवेंट खत्म होने के लिए लास्ट मैच तक. सो आई गेस ऑडियंस भी वेट करेंगे हमारे लिए. अभी उनको देखना ही पड़ेगा पहले 3 मैचेस, ताकि वो पता करे कौन है जो आखिर 4 प्लेयर्स दोनों टीम से खेलने वाले हैं. एंड आप बता ही रहे हो कि काफी अच्छे प्लेयर्स हैं. आई मीन ऑफ कोर्स ओजी में सब बड़े बड़े प्लेयर्स ही तो है. एंड बात करते हैं कापा की, तो मुझे बहुत पुराने यादें आ जाते हैं कापा के. ही इज वन ऑफ द एक्सपीरियंस्ड प्लेयर एंड वन ऑफ द एल्डेस्ट आई बिलीव. इज बिन देयर इन द सीन फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. उन्होंने उन्होंने आई थिंक ही नोज सीएस को इनसाइड एंड आउट.
एब्सोल्युटली एंड मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो टीम डू एंड स्कैमिश का मैच है, वेल मैं आपको रिवील कर सकता हूँ बट मैं रिवील नहीं करना चाहता, लाइक इट्स देयर इन फ्रंट ऑफ मी, बट ऑडियंस के लिए मैं ये टास्क छोड़ने वाला हूँ। आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो एक्चुअली खेलने वाले हैं, एंड वेल व्हाट कैन वी टेल आवर ऑडियंस अबाउट दीज मैप्स दैट वी आर गोइंग टू सी दिस आफ्टरनून, बिकॉज ये मैप्स लाइक नॉर्मल सीएस मैप्स नहीं है, दे आर कस्टम मैप्स, यहाँ पे रेड बुल के साथ इंटीग्रेट करके ये मैप्स Yes. बनाए गए हैं, एंड इन्हीं मैप्स के ऊपर हमें आज की शाम ये गेम देखने का मौका मिलेगा। एंड इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर ये है कि लाइक आप कह सकते हैं कि इट्स बेसिकली लाइक डोमिनेशन, but it's not exactly domination, because Yeah. domination you need to hold the ground and you get points. Here it's reverse domination, and इसीलिए ये और भी मजेदार है। What is more interesting is that if none of the teams are actually holding down the point, both of the teams are losing 1 point every second. तो आपको वहां पर जाके किसी भी हाल में पॉइंट होल्ड करना है अगर आप उस मैच हारना नहीं चाहते हैं तो। ओह माय गॉड, उसका मतलब जब वो इंटेंस गनफाइट्स में इंक्लूड होते हैं, अगर वो बाउंड्री क्रॉस कर देते हैं तो एवरी सेकंड काउंट्स फॉर देम, तो वो लोग काफी ज्यादा ही पॉइंट्स खो सकते हैं जब वो एक फाइट में इंटेंसली इन्वॉल्व हो। तो आई बिलीव लाइक एवरी प्लेयर, ये बस गेम, ये गेम बस गन्स का नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू बीन गिवन विथ capturing that particular area and keeping it so that you can increase your points, and the second you leave you're going to lose the double of what you earned. एब्सोल्युटली एंड अगर आप बात करेंगे मैं एक मैच देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, स्पेशली अगर आप बात करेंगे जो पहला मैच है एक्सकैली एंड साई वर्सेस एसके रॉसी एंड डेथ मेकर। लाइक आपको पता है ये चारों प्लेयर्स ऑप के साथ लाइक दे आर जस्ट अनस्टॉपेबल। AWP, they are insane. That's exactly the word I'd be referring to as this players' performance. But yes, अगर ये चारों एक दूसरे के अगेंस्ट में आते हैं, अगर ये चारों एक दूसरे के अगेंस्ट में परफॉर्मेंस दिखाते हैं, देन इट्स लाइक मैं ये आपको कह सकता हूं कि बेसिकली आपको लाइक ऑप वर्सेस ऑप एक्शन देखने का मौका मिलेगा तो जरूर, और उसी के साथ साथ जो स्किल लेवल है, इमेजिन दैट कमिंग ऑन शो हियर। या स्किल्स तो काफी बढ़िया होने वाले ही है, बिकॉज चारों के चारों धमाधार धमेकार प्लेयर्स है। एंड डेथ मेकर के बारे में बात करते हैं, सनी दास, ऑफ कोर्स एवरीबडी knows him as that famous boy who got all over India with his CS:GO kills, I believe. And I guess he's gonna keep the momentum on in this tournament भी। देखते हैं कि इतने दिनों के बाद ये प्लेयर्स वापस आ रहे हैं गेम पे, उनको कैसे फीलिंग लगेगा, उनका परफॉर्मेंस कितना दूर तक जा सकता है। और अभी हम इंतजार कर रहे हैं स्केड्यूल की तरह, सो हम एक बार क्विकली जॉइन जंप इन करके देख लेंगे कि स्केड्यूल कैसे होने वाला है। तो दिस आर गोइंग टू बी द फर्स्ट 4 मैचेस हैपनिंग टुडे, स्टार्टिंग ऑफ विद हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एक्सकैली साई वर्सेस टीम स्क्रिल्स, and we have Powermix versus Team Antidote, and we have Couple Fighter versus Team Venom, and the last one जो मुझे सस्पेंस पे छोड़ दिया गया है कैप्टन प्रेस के हाथ से, Team Duo versus Scamish. I might have an idea Scamish, but उनका नाम से तो मैं कुछ निकाल नहीं पा रही हूँ, मैं थोड़ा 7 सेंस यूज करने की कोशिश कर रही हूँ। Well, I think 8, 9, 10 cents भी इस बात के लिए कम पड़ जाएगा, because I'm not going to tell them. Okay, let me just tell. जो पहला जो मैच होने वाला आप देख सकते हैं यहाँ, it's going to be Excali and Sai Somersetti versus SK Rossi and Skills of course, and उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे Deathmaker, Antidote versus Amit Rasu and Right to Ace आपको देखने का मौका मिलेगा। That's Powermix for you. अगर आप तीसरे मैच की बात करेंगे, it's going to be Hellfighter and Kappa playing alongside against Team Venom, जहाँ पे Rexy and Venom साथ में खेलने वाले हैं। अगर आप चौथे मैच की बात करेंगे, that is the quarterfinals number 4, it is going to be none other than Rafa and Flex coming in, and that is why I was not revealing to the audience that who is going to be playing. It's Rafa, and I'm just waiting for this guy to come up and play. We have the Tamil boys together. Oh yes, and it's going to be against whom? It's going to be Lightning Fast and Hell Ranger combined together. This is going to be the first match. ये आज का पहला मैच होने वाला है। Well, you can see they are ready. SK Rossi, same posture, Sai Somersetti alongside Excali. They are ready. They are looking confident to go. आप कुछ नोटिस कर रही हो, एक्सकैली और सिमर दोनों भी अभी भी जुड़े हुए साथ में, अभी भी एक साथ खेलते हैं, एंड सो डोज एसके रॉसी एंड स्किल्स, दोनों भी अभी एक ही टीम में एक ही साथ में खेलते हैं। तो इट्स मोर लाइक अ प्रोफेशनल टूर्नामेंट हो गया। अभी तो ओजी का तो है, चारों के चारों प्लेयर्स है, इसको मैं बहुत ही नाम से जाने हुए प्लेयर्स है, बट व्हेन इट कम्स डाउन इट्स मोर लाइक दी टू deadly duos facing off each other, and it's going to be a really interesting match. Absolutely. Well, SK Rossi versus Sai. I believe
दोनों ऑप के बहुत ही तगड़े तौर खिलाड़ी है, तो यहाँ पर ये देखने में बहुत मजा आने वाला है कि एसके रॉसी यहाँ पे जब एडब्ल्यूपी का इस्तेमाल करते हैं, उनके अगेंस्ट में कौन आने वाले हैं एडब्ल्यूपी में डुअल निकालने के लिए। इट्स गोइंग टू बी काली और इट्स गोइंग टू बी साई। व्हाट इज गोइंग टू बी योर प्रेडिक्शन? आई वुड से साई, बिकॉज साई को काफी काफी पहले से जाना हुआ है ऑफ गॉड की तरह। उन्होंने इतने सारे क्लचेस किए हुए हैं वो गेम में, सीएसगो में, बस उनको ऑफ लगा के एक जगह बैठ जाते हैं और एक के बाद एक वॉक इन करते थे वो उनके क्रॉसर पे, एंड ही नेवर लेट अ प्लेयर आउट ऑफ हिज क्रॉसर, नॉट टिल डेट। मैं जितना तक देख चुकी हूँ साई को, तो साई को तो सब जानते ही है। एंड ऑफ कोर्स इसके रॉसी एक अदर साइड ऑफ द कंट्री से आते हैं, जहाँ से साई आते हैं एकदम ऑपोजिट से आते हैं, मुंबई से रहते हैं इसके रॉसी, एंड वो भी काफी बढ़िया खेल लेते हैं ऑफ। एंड जब हम बात करते हैं फ्रैग्स की, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ देम विल बी टेकन बाय स्किल्स एंड एक्सकैली, बिकॉज दोनों के दोनों राइफल्स में काफी पॉपुलर है। वेल एक कहावत है, साई को ऑप दीजिए साई मारेगा। That has been like one of the most used phrases मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे जब भी आप ऑप की बात करते हैं। एंड आज भी आई थिंक ये कहावत बहुत ज्यादा लागू होने वाला है। तो क्या साई आज ऐसा ही करने वाला है कि उनको ऑप मिलेगा एंड वो मारने वाले, वो रुकने नहीं वाले। ही इज गोइंग टू बी दैट अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर दैट ही इज इन द गेम। मैं बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुई इस पहले मैच के लिए। वेल आप एक से दूसरे मैच को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक दिस मैच इज गोइंग टू बी द बेटर वन, दिस मैच इज नॉट गोइंग टू बी दैट मच ऑफ अ गुड वन। हर एक मैच ऑन देयर लेवल, इट्स लाइक इफ यू हैव एन एंटायर 100%, इट्स लाइक अ 25% इक्वल शेयर ऑफ एक्साइटमेंट फॉर ऑल दीस फोर ब्रैकेट्स। सब मैचेस अच्छे होने वाले बिकॉज वी हैव ऑल द ओजीज। एग्जैक्टली। तो सब जो पुराने दोस्त पुराने गेम में वापस जाता है, जहां वो बिलोंग करते थे, जहां उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया है, अभी वहां आने के बाद तो उनको बहुत ही घर जैसा फीलिंग आता होगा। जब मैं भी सीएस को खेलती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं काम डाउन हो जाती हूँ गेम खेल के, बट एक टाइम था जब मैं चीजें तोड़ने लगती थी वो गेम में जीतने के लिए। बट आई गेस इट ऑल कम्स डाउन टू द ब्यूटीफुल मोमेंट। एंड मैच के बारे में तो ठीक है, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन विच मैप विल दे पिक। मुझे लगता है कि वो स्काई प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं और मे बी डिजिटल आर्काइव्स, दोनों के दोनों काफी बढ़िया मैप्स है। मुझे ये दोनों में से एक मैप लग रहा है कहीं अंदर। आई थिंक डिजिटल आर्काइव्स एक कॉमन मैप हो सकता है, बिकॉज जो जैसे कि मैं कह रहा था कि जो मैप पिक रेशियो है वहां पर जाके डिजिटल आर्काइव्स भी हमने बहुत देखा है, हमने स्काई प्लेटफॉर्म भी बहुत ज्यादा देखा हुआ है। तो ये जानने के लिए मैं बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहने वाला हूँ कि कौन कौन से मैप्स के ऊपर खेला जाएगा। आपको ऑफकोर्स पता चल जाएगा यहाँ पे ऑन स्क्रीन जब आने वाले मैप्स, तो आप लोग भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं आपका कौन सा फेवरेट मैप रहने वाला है, वो भी आप हमें जरूर बता सकते हैं यहाँ पे। पहले जब मैप्स आएंगे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितना ज्यादा उछल कूद होने वाले, जंप पैड्स होने वाले वहां पे आपको मिलेंगे। अगर आप बात करेंगे उसी के साथ साथ there's going to be weapon upgrades, there's going to be health shot। तो बहुत सारा आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजों को एक साथ लाके रेड बुल क्लिक यहाँ पे आज खेला जाएगा आपके सामने। 2 vs 2 CSGO का जो इवेंट है, OG Unite matches along with the Red Bull Click event, it's going to be a blast। Well, any predictions about the first match that we are going to see? हाँ, जो चीज मैं बोलने के लिए डर रही थी आपने वही क्वेश्चन पूछ लिया, बिकॉज ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर काफी मुश्किल है देने के लिए, बिकॉज 4 प्लेयर काफी अच्छे खेल लेते हैं। एंड जब भी 4 प्लेयर को दो जोड़ी में बनाया गया है, मुझे लगता है कि और पावरफुल हो गया गेम और इंटेंस हो जाएगा। डीप डाउन मैं प्रेडिक्शन नहीं दे सकती हूँ ये गेम के लिए, बिकॉज इट्स अ 2v2 दैट वेयर ऑल द इंटरेस्टिंग फैक्ट कम्स इन। इट्स अ 2v2, सो कुछ भी हो सकता है ये 2v2 में। मे बी एक प्लेयर जाके 2 प्लेयर को कॉन्स्टेंटली नॉक कर सकता है, नहीं तो एक टीम सीख सकती है कि ओपोनेंट टीम को कैसे टैकल करना है, बिकॉज ये लोग ये गेम को काफी बार खेल चुके हैं एक गेम, सो उनको पता होगा कि उनका अपोनेंट कितने तरीके से कौन सा गन अच्छे से यूज कर पाते हैं। बट अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शंस आई फील एक्सकैली एंड साई। अगर आप नहीं भी बताते then I would have asked you the question in a different form, because ये जानना बहुत जरूरी है, because there are We two definitely know how to get into the answer. exactly like देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि 2 टीम्स हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर आप किसी दोस्त के साथ बैठ के देख रहे हैं ना, then एक टीम चूज कर लीजिए, वहां पर जाके आप थोड़ा सा like it's going to be more interesting if we pick sides actually। So yeah, of course Elika here has gone with Excali inside। I'm gonna stick with Rossi। I don't know who's going to win. Well, it's a competition between us Yes, as well now। So yeah, let's see who Captain wins it। versus Yeah, it's Elika। Captain versus Elika, who's going to win। आप लोग भी predictions बता सकते हैं जरूर। But yes, आप बताइए इन चारों खिलाड़ियों में से आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है? Love one, support everyone का strategy बिल्कुल ना भूले, because ये strategy
as a whole helps the Indian esports community to grow. Yes, we are growing together. हम एक सब एक family की तरह हैं, and I treat everybody as same because at the end of the day we are all gamers. We are all here putting out our talents and passions, and somebody are casual gamers who are trying to, after a long day, after a long time day, we come down, we get on the PC, we start, playing games, we feel good, we make friends, and बहुत ही दूर आ चुके हैं इंडिया ई स्पोर्ट्स में। कभी बहुत ही पहले सालों पहले हमने CS 1.6 से चालू किया था, एंड नाउ वी आर इन सच बिग इवेंट्स दैट रेड बुल इज होस्टिंग, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच गाइस स्पोर्ट्स फॉर गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कास्ट बिसाइड कैप्टन प्राइस। वेल, मैप्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, which are going to be the OG reunite maps. Well, OG reunite maps, जैसे कि मैंने कहा था already, they are pre-selected maps that has been selected by League of in consideration with the players here. तो जो 3 maps रहने वाले हैं, of course, पहला map it's going to be Digital Archives. There is no doubt about it. The second map it's going to be City Palaces. And the third map is even more interesting because it's Sky Platform. मैंने 2 मैप्स तो सही से गेस कर लिया था, वो तीसरा वाला मैं थोड़ा सोच रही थी बिकॉज जो 3 मैप बचे हुए थे उनमें पहला नाम याद रखना काफी मुश्किल था। फिर दूसरा आता था कि मैप्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है वो, बिकॉज हमको एक बार 3 कैप्चर करने का भी एक मैप है, सो एक मैप एक लेवल का इंटेंस देता है, एज वी हैव लेवल्स एज वेल, एंड स्काई प्लेटफॉर्म ऑफ कोर्स वो लेवल 2 पे जाना जाता है, एंड वी आल्सो हैव जेम पैक्स व्हिच मेक इट इवन मोर इंटरेस्टिंग। मैं देखना चाहता हूँ कि स्काई प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली में कैसे खेलते हैं, लाइक स्काई ई-स्पोर्ट्स, स्काई प्लेटफॉर्म। वेल, हम भी स्काई प्लेटफॉर्म में बैठे हम भी स्काई प्लेटफॉर्म पे बैठे, दिस इज आवर प्लेटफॉर्म दैट वी आर प्लेइंग ऑन। तो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं प्लेयर्स, थोड़ी देर में यहाँ पे पहला जो बेस्ट ऑफ 3 होगा ओजी यूनाइट का, वो आपके सामने आने वाला है। एंड मैं कहना चाहूंगा कि स्काई प्लेटफॉर्म मैप, पर्सनली स्पीकिंग, मैंने ये मैप थोड़े से प्रैक्टिस किए हुए हैं यहाँ पे बिफोर कमिंग हियर। द प्लेयर्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर दिस डे, एंड एक्साइटेड भी है हम लोग जानने के लिए कि एक्चुअली में खेला कैसे जाएगा, व्हाट आर द strategies that they have been coming through. And as Ankit Pant aka Venom just said ki it's all about the fun. There's going to be competition, Yes. there's no doubt about it, but there has to be fun there, and I am super excited to know कि कैसे प्लेयर्स टैकल करेंगे एक दूसरे को, कैसे प्लेयर्स मैप्स को अपने खाते में लिखना चाहेंगे, बिकॉज हमें पता है कि कितने स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है ये अपने फील्ड्स पे। स्ट्रॉन्ग तो सब लोग है, बट आखिर में देखेंगे कौन किसको डिफीट कर सकते हैं, बट उसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा मैच शुरुआत तक। वेल, पहला मैप तो हमको पता ही है, डिजिटल आर्काइव्स, इट्स लाइक अ सर्वर रूम, एंड काफी इंटरेस्टिंग, मुझे काफी टेक वाइब देती है वो मैप देख के, because I'm a tech girl and I hope you are. Everyone is. Of course, all gamers are tech geeks. They need to know what they're playing on, right? Like आप किस पे खेल रहे हैं आपको पता होना चाहिए। Like for example, अगर आपके पास AOC गेमिंग मॉनिटर्स है 144 हर्ट्ज से, अगर आप चाहते हैं देन अभी के लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट यस जो चैंपियंस बनाएंगे हमारे रेड बुल फ्लिक के जो प्लेयर्स रजिस्टर करके खेल रहे हैं, जो चैंपियंस बनने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी गेटिंग 1 each of this 144 हर्ट्ज गेमिंग मॉनिटर्स बाय AOC। एंड अगर आपको ऐसे ही स्मूथ एक्सपीरियंसेस चाहिए, यू गाइज ऑल्सो कैन गो हेड टू योर नियरेस्ट स्टोर एंड गेट इट। एंड डेफिनेटली अगर आपको एनर्जी चाहिए देन हैव अ सिप ऑफ रेड बुल। यस, पर रेड बुल तो मेरे साथ बैठा है इधर, एंड मैं वेट कर रही हूँ जब मैच स्टार्ट हो जाएगा, मैं आराम से उसको सिप करते हुए कास्ट करूँ, एंड मैं इंटेंस तो देखने चाहती हूँ बिकॉज मेरा सीट थोड़ा गर्म होते हुए जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे ठंडा होना चाहिए, बिकॉज जब मैच हो जाएगा देन आई विल बी ऑन अ हॉट सीट। Absolutely, because हमें पता है कि कितना ज्यादा एक्साइटमेंट आता है, and things are gonna get hot. There's no doubt about it that things are gonna get really really hot here. जो competition होगा आज हमारे सामने, that's going to be off the charts here. उसी के साथ साथ दोस्ती है, इन गेम दुश्मनी भी है, तो ये सारी चीजें जब when they combine together and come out on the stage, that is just bonkers. Yes, I think all the players and all the audience in the chat are so going crazy. They are so hyped up about the event. So मुझे भी जानना है, मतलब हाँ मैं अभी चैट पढ़ तो नहीं सकती हूँ, बट मुझे जानना है गाइस कि आपका रिएक्शन कैसे था जब आपको पता चले कि ओजी प्लेयर्स आने वाले ये इवेंट पे, और आपके जो भी पुराने फेवरेट पुराने प्लेयर्स थे वो सब अभी EOS फेस करेंगे, एंड दैट इज ऑल्सो इन वन ऑफ द बेस्ट FPS गेम्स इन ई स्पोर्ट्स, दैट इज CS:GO। आपके भी काफी सारे मेमोरीज जुड़े होंगे CS:GO से, आई मीन मेरे तो काफी जुड़े थे। मैं शुरुआत ही गेम्स खेलना CS:GO से किया था मैंने, पहले खेलना आता नहीं था, फिर बाद में गालियां खा खा के सीख लिया।
Well, One thing, every professional player, I'm pretty sure, must have gone through this phase जहाँ वो इतना grind करेंगे, because this game is all about strategies and the gunfights. It's all about how good you can present yourself into the site. एब्सोल्युटली एंड आई बिलीव टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, ये भी एक Yes. बहुत ही जाना माना कहावत है जो फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे टीम्स बन चुके हैं, हमें प्लेयर्स पता है कौन कौन खेलने वाले हैं। साई एंड एक्सकाली टुगेदर एंड उनके ओपोनेंट पे रहने वाले स्किल्स एंड एसके रॉसी, लाइक इट्स गोइंग टू बी फन, इट्स गोइंग टू बी इंटेंस एंड आई बिलीव एसके रॉसी जब चालू हो जाते हैं उनको भी रोकना मुश्किल, लाइक आप एक भी प्लेयर को यहाँ पे एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज हर Yeah. प्लेयर यहाँ पे अपने लेवल इसलिए हमने पे उनका खेलता नाम है। ओजिस रखा हुआ है, Exactly. बस ओजिस. OGs, they are just OGs and they are just आप कह सकते हैं कि अपने अपने जगह पे they are absolutely flawless in their own game। तो हमें देखना पड़ेगा कि पहला जो मैच हम देखेंगे एक्चुअली में कौन लेके जाता है। बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला है जिनमें आपको पता है कि 3 बार खेला जाएगा, अब 3 मैच खेले जाएंगे। उन्हें 3 मैच में से जो पहले 2 मैच जीतेंगे वो यहाँ पे अपना पहला सेट नाम कर लेंगे एंड दे विल बी मूविंग ऑन टू द सेमीफाइनल्स। एंड उसके अंदर भी आपको 3 बार में से 2 बार जीतना पड़ेगा। यू नीड टू कीप ऑन योर टिकट्स फ्रॉम नॉट गेटिंग इनटू 0 और यू विल लूज दैट पर्टिकुलर राउंड है। तो वहां पे आपको बेस्ट ऑफ 3 का देखने का मौका मिलेगा। सो इट्स बेसिकली अ टोटल ऑफ 9 राउंड्स एट द मोस्ट एंड 6 राउंड्स एट द मिनिमम। बहुत बहुत ज्यादा मजा आने वाले। इट्स गोइंग टू बी अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग व्हेन द गेम स्टार्ट्स ऑन। जब कूदते हुए प्लेयर्स आने वाले हैं, व्हेन दे आर गोइंग टू बी टैपिंग दोस वन टैप्स 180 डिग्री फ्लिक्स, विल बहुत ज्यादा फ्लिक्स मैंने देखा हुआ है ऑलरेडी हाइलाइट्स में क्वालिफायर्स के। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं ये जानने के लिए कि आज जब ऑन शो मैचेस खेले जाएंगे तब कितना ज्यादा यही फ्लिक्स हमें देखने का मौका मिलेगा। हाँ, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो सबने गन्स के बारे में सुन लिया, बट किसी ने ग्रेनेड्स के बारे में नहीं सुना है। ग्रेनेड्स भी है Flash lineup? मेरे ख्याल से। फ्लैश लाइनअप्स, Yes. I think that's something we should never ever forget जब हम CS की बात Yes. करते हैं। सीएसगो में ग्रेनेड किल्स काफी पॉपुलर है और अभी भी होंगे, बिकॉज अभी जो मैच होने वाला है, हम आई थिंक वी कैन क्लेम ग्रेनेड, स्मोक्स एंड फ्लैशेस। फ्लैशेस काफी ज्यादा एडवांटेज बढ़ा देते हैं एनिमी को टैकल करने के लिए और उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने पोजीशन से। बट या ग्रेनेड्स आर गोना डू अ लॉट ऑफ डैमेज। मैं बोलती हूँ गन फाइट से ज्यादा ग्रेनेड से आप डैमेज आसान से दे सकते हो, बिकॉज व्हेन यू पीक आउट एंड आप एक 1v1 फाइट लेना चाहते हो तो आप भी डैमेज ले सकते हो। बट व्हेन यू नो एंड प्रिडिक्ट अ प्लेयर एंड थ्रो द ग्रेनेड, इट गिव्स यू मोर एक्यूरेसी एंड मे बी डैमेज ज्यादा हो सकता है। एंड ग्रेनेड किल्स आर often known as the popular kills, I believe. एक और चीज है जो हम बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, लाइक CS है एंड नाइफिंग ना हो। Knife allowed है करना। Of course it's allowed, तब like, but तब who तो is पूरा gonna do it? ऑडियंस मौत आज देने वाला है। पागल होने वाला है। Who is gonna knife? Like आपको क्या लगता है कि कौन नाइफ होने वाले हैं एंड कौन नाइफ करने वाले? Because I don't think आप प्लेयर्स के नजदीक भी जा पाएंगे when they Are happen. we allowed to use skins for knives? I think we are allowed to use skins. I think we can Karambit use आ जाएगा तब flashbacks. तो karambit, Yeah. bayonet, Oh, the craze about the butterfly. karambit. Remember that when it just was Yes. there? It was absolutely crazy. तो एक flashbang, close range जाके knifing. It's gonna be bloody there on the stage because Yes. it's gonna be madhouse है जब प्लेयर्स खेलने आने वाले हैं। वेल कुछ ही देर में आपके सामने यहाँ पे पहला मैच आपको चालू होते हुए मिलने वाला है। प्रेडिक्शंस यहाँ पे अपने दर्ज कर दीजिए, लाइक कंप्यूटर जी को बोलिए कि लॉक कर दे यहाँ पे आपकी जो प्रेडिक्शंस है, लाइक हमारे कंप्यूटर जी ने तो लॉक कर दिया हमारे शायद कंप्यूटर से। जी they have just locked us here on the desk here, so yeah we are going to be here। आप लोग बैठ जाइए, एकदम कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, बिकॉज ये जो राइड के लिए हम जा रहे हैं, ये जो रेड बुल फ्लिक राइड के लिए हम जा रहे हैं अभी, it's going to be a very very fun, exciting and adventurous ride of इन the OG शॉर्ट players। रोलर कोस्टर राइड बोलना चाहती हूँ मैं। एक शॉर्ट, आई थिंक इट्स नॉट शॉर्ट बट हम कह सकते हैं इट्स गोइंग टू बी an exciting roller coaster, like they are scary Yes. of course, but it's going to be exciting, it's not going to be scary because of all these players। हाँ, स्केरी तो थोड़ा बनेगा जब हम इतना क्लोज आ जाता है और एक ओवर टाइम चल रहा होगा, दोनों टीम्स बैक टू बैक एक को एक जीत रहे होंगे, तो तब तो डर लगेगा ही कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपका फेवरेट प्लेयर हार सकता है, आपका फेवरेट प्लेयर जीत सकता है, पता नहीं क्या होने वाला है, वो तो हम गेम में जाके ही पता करेंगे। मुझे लगता है कि ये रोलर कोस्टर में ज्यादा अप्स ही होंगे, डाउन्स काफी कम होंगे, बट जो भी डाउन होंगे वो तो बहुत ही डीप होने वाला है, बिकॉज वो एक तरीके से हाइप क्रिएट कर जाएगा।
एब्सोल्युटली एंड इस रोलर कोस्टर राइड को सरवाइव करने के लिए आप लोगों को बस यहाँ पे बने रहना है हमारे साथ। आज की शाम एंड कल की शाम को भी हमें सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स देखने का मौका मिलेगा। ऑलरेडी हम लोगों ने आपको बता दिया है कि क्या क्या रिवॉर्ड्स रहने वाले यहाँ पे जो विन करने वाले हैं नेशनल फाइनल्स को। वेल जो प्लेयर्स हैं हमारे सामने वो खेलेंगे, वो भी तैयार हो चुके हैं एंड कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको पहला मैप यहाँ पे आता हुआ दिखने वाला है। डिजिटल आर्काइव्स इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मैप दैट वी सी ऑफ द फर्स्ट ओजी रीयूनाइट मैच एंड आई बिलीव बेस्ट ऑफ 3 है तो हमने ऑलरेडी प्रेडिक्शंस दे दिए हैं। बट पहले मैप के बारे में आपका क्या कहना है? लाइक इट इज अ क्लोज मैप, इट्स नॉट एन ओपन मैप, यू कैन नॉट बी लाइक रनिंग अराउंड फ्रॉम एवरीवेयर। इट्स अ क्लोज मैप। आपको बेसिकली एक लाइब्रेरी ऑफ कंप्यूटर्स के एरिया में खेलना पड़ेगा। देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ हाइज एंड लोज इन द मैप्स देयर। आप कह सकते हैं कि क्रॉस फायर भी हमें देखने का थोड़ा मौका मिल सकता है। सो एनीथिंग यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मैप हियर? मैं तो ज़्यादा पिस्टल किल्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ एंड पिस्टल किल्स के अलावा अगर हमको एबिलिटीज क्लेम करने आते हैं तो मे बी अ लॉट ऑफ फ्लैश बैंक्स कैन बी यूज्ड एंड ऑफ कोर्स ग्रेनेड्स बिकॉज मैप थोड़ा छोटा है और लेवल भी बिगिनिंग लेवल है ताकि और जिसको भी आइडिया आए कि कितना इंटेंस हो सकता है एक मैच। सो बेसिक लेवल पे तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हमारा जो जो एंटायर मोटिव है कैप्चर करने का डोमिनेट करने का वो पर्टिकुलर एरिया को उस पे ही ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। गन फाइट्स देख सकते हैं बट काफी मिनिमल गन फाइट्स लेते होंगे। वेल आई विल से कि गन फाइट्स लेंगे लोग बट थोड़ा संभल के लेना पड़ेगा बिकॉज अगर आप एरिया होल्ड कर रहे हैं, अगर आप पॉइंट को होल्ड कर रहे हैं, लाइक देयर गोइंग टू बी 3 पॉइंट्स देयर, तो अगर आप एक भी पॉइंट को होल्ड आउट कर रहे हैं वहां पर चल के आपके टिकट लॉसेस नहीं होंगे। अगर आप होल्ड नहीं कर पाते हैं देन आपके टिकट्स ऑफ कोर्स लॉस होने वाले हैं। अगर दोनों टीम्स नहीं होल्ड कर पाते देन योर टिकट्स आर गोना गो डाउन। अगर ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि लाइक एवरी बोथ द टीम्स दे हैव द सेम नंबर ऑफ टिकट्स व्हेन द टाइमर रन्स आउट, वन टिकट यहाँ पे उनके दोनों के सामने रह गया, इट्स गोइंग द टाई ब्रेकर जो होने वाला है इट इज गोइंग टू बी कि एक रैंडम पॉइंट एबीसी में से एक्टिवेट होने वाला है। जो भी टीम पहले जाके वहां पे उस पॉइंट को टच करेंगे दे विल बी द विक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर राउंड है। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ स्प्रिंट अगर टाई हो जाता है तो, बट आई डोंट थिंक टाई तक पहुंचने भी वाला है मैच बिकॉज इट्स द ओजी प्लेयर्स। सो या ट्रिकी तो काफी होने वाला है ये गेम। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने क्वालिफायर्स में देखा है कैप्टन, आई फील लाइक कि ये गेम इट्स जस्ट नॉट अबाउट कैप्चरिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट द किल्स ऑफ कोर्स। एंड उससे ज्यादा मैं टाइम फैक्टर की बात करना चाहती हूँ। तुमको एक राउंड के लिए इतना टाइम दिया जाएगा एंड इतने टाइम में इफ यू आर एबल टू स्कोर द मैक्सिमम पॉइंट्स एज यू कैन, इफ यू कीप मेंटेनिंग दैट देन यू हैव गॉट द ट्रिक ऑफ द गेम। सो गेम खेलना भी है एंड उसका ट्रिक समझना भी है। तो अगर आप टाइम फैक्टर आपके हाथ में लगा के जा रहे हो और आप किल्स और पॉइंट्स लेने की कोशिश कर रही हो और वही तुम मेंटेन करोगे थ्रू आउट द ऑल द राउंड्स देन इट्स एन इजी विन आई गेस। एंड यह है काफी अच्छा टिप है। तो अभी जो भी खेलने वाले हमारे ओजेस उनके लिए काफी अच्छा बढ़िया टिप दे दिया मैंने टाइम फैक्टर का। सो आई होप वो टाइम का भी यूटिलाइज कर ले। वेल आई बिलीव टाइम का यूटिलाइज हर प्लेयर यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि जब ओजी प्लेयर्स पहले तो मैचेस खेलेंगे, वेल जो आपको एक बार बता देता हूँ कि जो यहाँ पे आपको आज देखने का मौका मिलेगा, जो फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, सबसे पहले आपको 2 ओजी के क्वार्टर फाइनल्स देखने का मौका मिलेगा, देन यू हैव 2 रेड बुल फ्लिक क्वार्टर फाइनल्स कमिंग इन। उसके बाद आपको ओजी यूनाइटेड के बाकी 2 क्वार्टर फाइनल्स देखने का मौका मिलेगा। जो भी 5 रिमेनिंग मैचेस होंगे इस पहले मैच के दौरान, आई थिंक यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स बैठ के देखने वाले कि किस तरीके से खेला जा रहा है। एंड आफ्टर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मैं लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम नहीं कहना चाहूंगा, आफ्टर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जब यहाँ पे प्लेयर्स खेल रहे हैं तब जाके कितना ज्यादा वो भी अपने गेम को अपने बेसिस पे दिखा पाते हैं। सो क्या लगता है आपको एलिका कि आज की शाम जो टीम्स ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, क्या यहाँ पर अभी पहले गेम को देख के या फिर दूसरे गेम को देख के थोड़े से चेंजेस भी अपने स्ट्रेटजीज में वो ला सकते हैं? हाँ जरूर। आई मीन ये जो हमने लगाया है, ये जो पर्टिकुलर कस्टम ऐप से ये रेड बुल की बना हुआ है। सो ये गेम, ये जो पर्टिकुलर मैप हम खेल रहे हैं पहले कभी खेले नहीं होंगे ओजेस, तो उनके लिए भी ये नया मैप है, उनके लिए ये नया फॉर्मेट है। आपने विंग मैन देखा होगा प्रीवियसली सीएसगो में, बट ये विंग मैन की तरह है बट इट्स जस्ट मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। पहले तो हमको बॉम्ब प्लांट करना होता था, डिफ्यूज करना होता था, बट हमको एक ही जगह खड़े होके ओपोनेंट्स को फाइट करते हुए आपको आपके पॉइंट्स बढ़ानी है। जगह तो आपको दोनों को मिलेगा। एंड आई गेस हमने चालू कर दिया है, हमारा मैच ऑलरेडी लाइव जा चुका है, पहला राउंड आ चुका है। एंड आई गेस साइड ड्रीम्स ऑलरेडी 38 HP तक नीचे आ चुके हैं। वाओ, काफी पुराना नाम था साइड ड्रीम्स।
एंड एसके रॉसी, उन्होंने तो पहला किल ऑलरेडी ले चुके हैं साइड टीम्स के ऊपर, एंड ओपन करते ही स्काउट का इस्तेमाल देख रहे हैं इसके रॉसी के हाथ में, मेरा फेवरेट गन ऑफ कोर्स। वेल चलेंगे सीधा मैच की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाम काफी इंटरेस्टिंग रखा है, आप देख सकते हैं एक्सकाली गॉड। तो लेट्स सी व्हाट द गॉड प्लेयर कैन डू। फार्मर्स उनको मिल चुका है ऑलरेडी, एंड आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके वो कंट्रोल लेना चाहेंगे साइड पे। यहाँ पे साई विल बी फाइंडिंग वन ऑन टू एसके रॉसी, एंड सीधा यहाँ पे अपने एरिया के ऊपर जाएंगे अपना कंट्रोल मेंटेन करने के लिए। आप देख सकते हैं एक पॉइंट एक्टिवेट हो चुका है, एंड प्लेयर्स आर टेकिंग इट प्रीटी स्लो। लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज्यादा स्लो गेम प्ले फॉलो करेंगे प्लेयर्स, बट दे आर स्टिल गोइंग ऑन विद दैट स्लो गेम प्ले। हाँ या जरूर स्किल्स ने उनका हेल्थ पॉइंट्स ले लिया, एंड ही इज ट्राइंग टू हील, बट एक्सकैली he's already way too ahead. He's gonna take SK Rossi down, leaving it to absolutely no punch for either of the teams. इन स्किल्स ने या तो काफ़ी फ्रैग आउट ही चल रहा है, एंड मुझे लगता है कि टीम स्किल्स को फिलहाल के लिए 73% विन चांस है, विच जस्ट गॉट डिक्रीज टू 39% बिकॉज हमारे साइड ड्रीम्स आ चुके हैं यहाँ गेम में, एंड दे आर एब्सोल्युटली ट्राइंग टू विन दिस गेम एज अ फ्रैग आउट। पॉइंट्स तो अभी किसी ने स्कोर नहीं किया है, उनको अभी भी टाइम है पहला स्कोर लेने के लिए, एंड मुझे लगता है कि अभी चांसेस 50-50% हो चुके हैं कैप्टन। बिल्कुल, एंड जैसे कि हम देख रहे हैं करंटली, अगर आप बात करेंगे विन परसेंटेज एंड ये टिकट्स का जो सीन है ये टोटली डिफरेंट है। विन परसेंटेज ये है कि अगर आप कोई एरिया को कंट्रोल में रख रहे हैं, वहां पे चल के आप जितना ज्यादा एरिया कंट्रोल मेंटेन कर पाएंगे या फिर जितने ज्यादा आप हिल्स लैंड करेंगे, वहां पर चल के आपको विन परसेंटेज बढ़ जाएगा। बट इट डजंट मीन कि आप कंफर्म जीतने वाले हैं। आपको तभी जीतने का मौका मिलेगा जब जाके आपके ओपोनेंट के टिकट जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडशॉट मिल चुका है, एंड इमीडिएटली एक्सकाली अपने आप को फुल एचपी हील कर लेंगे। एंड जैसे कि मैं कह रहा था कि देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ स्लाइडिंग अराउंड दिस मैप हियर, एंड वही चीज हमें देखने का मौका मिल रहा है। हाँ, एंड साइड ड्रीम से एक और बार टेक डाउन होते हुए जिसके हाथ में स्किल्स ने एक किल मिल गया। स्कैटी गॉड डाउन टू 17 एचपी फिलहाल के लिए। गन क्लेम करते हुए आई गेस अभी हम M4 का इस्तेमाल देखेंगे AUG स्किल्स के हाथ में, एंड ऑफ कोर्स दैट AUG इज गोना डू डेफिनेटली सम वंडर्स। ही गेट्स हिमसेल्फ अ डबल राइट नाउ। साई और एक्सकैली दोनों को बैक टू बैक 2 किल्स लिए हुए हैं, एंड इट्स लाइक हमारे स्किल्स रुकने नहीं वाले हैं। इसके रॉसी भी अपने विन परसेंटेज बढ़ाते हुए 73% राइट नाउ, एंड अब हम अभी भी पहले राउंड में ही है, 1 मिनट 15 सेकंड बचे हुए हैं, एंड अभी तक किसी ने डोमिनेशन नहीं दिखाई है कैप्चर करने का। बहुत ही आराम से ये लोग जा रहे हैं, एंड आई गेस एक्सकैली इज इनसाइड द डोम एंड इज ट्राइंग टू गेट द कंट्रोल। हिल्स के हिसाब से तो मुझे लगता है कि इसके रॉसी स्किल्स डिड जस्ट साई फॉल डाउन? यस, ही डेफिनेटली डिड। वेल आई बिलीव दर्शकों को अगर पता नहीं है, मैं बताना चाहूंगा कि इफ यू फॉल ऑफ द मैप यू इमीडिएटली गेट डिसइंटीग्रेटेड, एंड वहां पे आपके ओपोनेंट के लिए एक टिकट आपके लिए एक टिकट कम होने वाला है। वेल फिलहाल के लिए साई यहाँ पे बहुत ही एक चीकी एंगल से आगे आएंगे, रॉसी का भी किल निकालने वाले हैं। एक्सकैली वंस अगेन स्टेइंग पुट टू हिज पॉइंट हियर हैज बीन स्पॉटेड बाय स्किल्स। क्या यहाँ पे किल निकाल के जा सकते हैं? फ्लैशबैंग यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, ट्राइंग टू गेट ऑन टू दिस एरिया, एंड इट्स गोइंग टू बी स्किल्स winning, to be very honest. SK Rossi and Skills यहाँ पे जीतने वाले हैं पहला राउंड, एंड मेहनत करना पड़ेगा। And yes, that is Skills getting the first round into the favor for his team with 9 kills. मतलब स्किल्स और किल्स दोनों एक ही नाम में। अभी देखेंगे कि कितना और अच्छा चांस हो सकता है, बट लगता है कि साई को अपना एक राउंड जो आ रहे हुए उनको वापस लाना पड़ेगा, जिसके लिए अभी 100% एफर्ट करने वाले हैं। Sai is down to very low HP, 14 HP बचा है। He should heal back with the health shot. वेल अगर आप बात करेंगे ये राउंड इंपॉर्टेंट है एक्सकाली साई के लिए, बिकॉज हमें पता है कि एक राउंड ऑलरेडी वो गवा चुके हैं। यहाँ पे स्किल्स विल बी स्पॉटिंग एक्सकाली, लेकिन एक्सकाली वापस 180 घूम के यहाँ पे किल निकालने वाले हैं। रॉसी एंड स्किल्स बोथ कंबाइन टू टेक डाउन एक्सकाली हियर। धीरे धीरे करके जैसे कि आप देख रहे हैं विन परसेंटेज का चांसेस अभी भी ज्यादा स्किल्स के लिए रहने वाले हैं,
but I think there is potential in both. I think like I am very positive about the fact कि यहाँ पे अगर आप बात करेंगे Excali and Sai, they can make this round into their favor as well, because अगर आप बात करेंगे they are both playing it, so यहाँ पे काफी ज्यादा स्लो गेम हमें देखने का मौका मिल रहा है. they are taking their time इस मैप को अपने नाम करने के लिए. डिजिटल आर्काइव का मैप आप देख सकते हैं, there are multiple points जहाँ पे आप गिर के एलिमिनेट हो सकते हैं. फार्मास का कितना ज्यादा यूजेज हो रहा है आप देख सकते हैं. 3 प्लेयर्स सर्वाइव करे, तीनों प्लेयर्स के पास अभी फार्मास है एंड बेरेटास लेके आने वाले. साई विल बी अपग्रेडिंग ऑन टू द फार्मास एज वेल. यस, फार्मास तो काफ़ी अच्छा एसएमजी है. जब हमने अर्ली बात किया था एंड इट वाज द मोस्ट यूज्ड एंड फेमस एज कैप्टन प्राइस सेड, एंड आई गेस उसी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है अभी फिलहाल के लिए. एक्सकैली हेल्थ शॉट वापस लेते हुए पहला राउंड स्किल्स कैप में चले गए. अभी 3 मिनट बचे हुए एंड साइड ड्रीम फिर से हमारे स्किल्स और इसके रॉसी एक को एक सपोर्ट देते हुए, एक को एक ट्रेड करते हुए भी बहुत ही अच्छे तरीके से किल्स ले रहे हैं. अभी विन चांस तो धीरे धीरे से स्किल्स के हाथ में बढ़ रहा है, बट आई गेस एक्सकैली एंड साई वो होने नहीं देंगे. बैक टू बैक एक लिया उन्होंने. एक्सकैली इमीडिएटली ट्रेड करते हुए. अभी फिलहाल हमारे पास इसके रॉसी है. जब तक स्किल्स स्पॉन हो जाए, इसके रॉसी अकेले है एंड एक्सकैली गॉड हर एंगल चेक कर रहे हैं फिलहाल. एंड वी हैव गलील इन दी हैंड्स. काफ़ी फेमस है एक के बाद गलील. एंड जब इकोनॉमी कम पड़ जाता है तो काफ़ी इस्तेमाल में आ जाती है एसएमजी गन. एंड आई फील लाइक we might see a little advantage into the hands of Excali and Sai. They might win this round actually. And ये round जीतने के बाद हमारा last round आने वाला है पहला हाफ का, that is third round. हमारे पास अभी भी 2 मिनट बचे हुए and Excali वो किल लेते हुए, which has come down to the beginning 50% chance for both of the teams to win this round. And with 2 minutes left on the clock थोड़ा मुश्किल तो होने वाला है. अभी फिलहाल तो मुझे फ्रैग आउट गेम ही दिख रहा है कैप्टन प्राइस. वेल आई बिलीव यहाँ पे काफी स्लो प्रोग्रेशन जैसे कि मैं कह रहा था लिया जा रहा है. यहाँ पे स्पॉट किया जाएगा. स्किल्स को विल बी कैरिंग वन ऑन टू साइज. वेल यहाँ पे एरिया का कंट्रोल वापस से लिया जाएगा बाय टीम स्किल्स एंड धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं उनका भी विन परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है. एंड आई बिलीव थोड़ा स्लो गेम प्ले लेना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नीड टू चेक दोस कॉर्नर्स, यू नीड टू बी केयरफुल दैट समवन इज नॉट स्टेइंग जस्ट वेटिंग फॉर यू. यहाँ पे रॉसी वापस आने वाले हैं एंड ही इज गोना टेक डाउन काली इवेंचुअली. स्किल्स अभी भी आप देख सकते हैं एक काफी डिफरेंट एंगल पे मौजूद होने वाले हैं. M4 उनको मिल चुका है. मुझे एक ऑग दिख रहा है यहाँ पे एक्सकाली के हाथों में, सो ही कैन करेक्ट दोस लॉन्ग रेंज शॉट विद द हेल्प ऑफ दैट स्कोप. यस, एंड AG आई बिलीव इज वन ऑफ द बेस्ट गन्स बिकॉज उनके पास मिनी स्कोप है जो आपका विजन और भी क्लियर कर देता है एनिमी के ऊपर. एंड हर एंगल चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज ये मैप उनके लिए भी नया है. एंड स्किल्स को देखिए, ईच एंड एवरी कॉर्नर चेक करते हुए धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं. उनके हाथ में 81% का चांस है विच जस्ट ड्रॉप डाउन एंड फिर से वापस आ चुका है 39% फॉर एक्सकैली साई एंड 61% फॉर स्क्रिल्स का टीम. एंड हमारे पास 1 मिनट बचा. अगर ये 1 मिनट में एक्सकैली और साई ने ज़्यादा किल्स नहीं लिए तो सेकेंड राउंड भी स्क्रिल्स के हाथ में जा सकता है, जो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी धीरे से गेम खेला हुआ जाए. बट एक्सकैली वो पेशेंस बहुत ही कम है. वो आगे पुश करने वाले वो एक किल लेते हैं एंड चांसेस को थोड़ा बढ़ाया, बट आई गेस स्किल्स ने इमीडिएटली इक्वल आउट कर दिया. फिर से उन्होंने वापस पे ला दिया है स्कोर बोर्ड को एज विथ 1 किल. एक्सकैली ड्यूल बैरेट्स का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी अच्छे तरीके से हेड शॉट देते हुए, which means now they have 73% of winning this particular round with only 25 seconds left on the clock. Team Skrills क्या कर सकते हैं वो? If they don't find frags, they might actually not be getting this round into their hands. वेल काफी ज्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं. वेल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जीतेंगे यहाँ पे एक्सकाली एंड साई एंड उन्होंने कमबैक भी करके दिखाया. दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड राउंड एंड बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला ऐसे ही हमें देखने का मौका मिलेगा. जैसे कि आप देख रहे हैं दे आर जस्ट कंटिन्यूइंग ऑन एंड इस राउंड में आते ही यहाँ पे फार्मास से एलिमिनेट किया गया है साई को. वापस रिस्पॉन होके आ जाएंगे वो, देयर इज नो डाउट्स अबाउट इट, बट जितना टाइम आपको लगेगा रिस्पॉन होके आने में वहां पे और भी ज्यादा डैमेज डील किया जा सकता है आपके टिकट्स के ऊपर. रॉसी विल बी गेटिंग वन ऑन टू साई एज वेल एंड सेंटर एरिया को ए पॉइंट को अभी के लिए होल्ड आउट करना पड़ेगा. जैसे कि आप देख रहे हैं प्लेयर्स आर गोइंग फॉर दोस पिक्स एज वेल एज दैट कंट्रोल ऑफ दैट एक्टिवेटेड लोकेशन एंड दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग ऑन. स्क्रिल्स के पास यहाँ पे काफी अच्छा विन परसेंटेज मुझे दिख रहा है. 79% is a huge percent, but Excali finds one onto skills and सीधा चले जाएंगे वो अपने ऊपर कंट्रोल मेंटेन करने के लिए साइड पे.
कंट्रोल तो काफी बड़े तरह से चल रहा है एंड एक्सकैली और साई सीख चुके हैं कि धीरे धीरे से गेम कैसे खेला हुआ जाता है एंड कितना कंट्रोल लेना कितना इम्पोर्टेंट है एंड वो परसेंटेज को रिड्यूस करने के लिए टीम स्क्रिल्स भी अपने जगह पे आ चुके हैं, वो वेट कर रहे हैं। साई और एक्सकैली दोनों काफी काफी ध्यान से हर एंगल चेक करते हुए जा रहे हैं। साई ड्रीम्स ही इज ट्राइंग टू क्लाइंब अप द लैडर विच कैन क्वाइट बी रिस्की। स्किल्स के हाथ में ग्रेनेड है, इमीडिएटली फर्मा स्विच करते हुए उनको साउंड मिल गया एंड वो इमीडिएटली अपने फ्रेंड के लिए ट्रेड लेने जा रहे हैं। एक्सकैली को एक किल मिल चुका है एंड अभी वो ट्रेड हो सकता है मेरे ख्याल से। उनका एचपी भी काफ़ी कम है, साइड ड्रीम्स 7 एचपी पे, एक्सकैली 47 एचपी पे एंड मे बी स्किल्स को डबल किल मिल सकता है यहाँ अगर वो धीरे से देखा हुआ जाए तो। 33% विन चांस फॉर स्किल्स एंड 67% फॉर एक्सकैली एंड साई। एक्सकैली एंड साई दोनों काफी अच्छे से टीम गेम कर रहे हैं, वो साथ में जा रहे हैं, साथ में एक मर गया तो ये ट्रेड ले रहे हैं। उनका गेम भी काफी बढ़िया चल रहा है एंड इसके रॉसी स्किल्स 2 किल्स ले चुके हैं बैक टू बैक विच मींस देयर विन परसेंटेज माइट हैव इंक्रीज्ड। वेल अभी के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं स्किल्स के पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है, बट एक्सकैली एंड साई ये दोनों प्लेयर्स कंबाइन करके जब खेलने आ रहे हैं दे आर आल्सो डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब। बट साई को यहाँ पे एक ही कॉर्नर में धकेला जाएगा एंड स्पॉट करने के इमीडिएटली बाद आप देख सकते हैं विल बी एलिमिनेटेड। और इसके साथ साथ अगर आप विन परसेंटेज की बात करेंगे, स्किल्स इज जस्ट कंटिन्यूइंग ऑन टू डिस्ट्रॉय प्लेयर्स हियर। रॉसी यहाँ पे फिर से साई को एलिमिनेट करेंगे। एक्सकैली एक अच्छा खासा फ्लैंक बिठा रहे हैं, बट विल someone be able to reach that position? Well, हाँ यहाँ पे एक्सकैली आगे आने वाले, going in with a double here and बहुत ज्यादा अच्छा आप देख सकते हैं प्रोग्रेशन फॉर द राउंड। राउंड तो काफी बढ़िया तरह से प्रोग्रेस कर दिया एक्सकैली बैक टू बैक लेते हुए एंड आई फील लाइक अभी एक और किल आने वाले हैं, बट एक्सकैली स्प्रे काफी सही टाइम पे हमें सो चुके थे एंड टैग भी दिया हुआ गया था इसके रॉस के हाथ से विच मीन्स एक्सकैली विल बी गेटिंग टेकन डाउन एंड द विन परसेंट जस्ट इंक्रीज्ड इनटू द फेवर ऑफ टीम स्क्रिल्स एंड इसके रॉसी अपना बेस्ट देते हुए फ्रैग आउट पे ही आउट फ्रैग कर रहे हैं साई और एक्सकैली को। वेल एक पॉइंट तो दोनों के हाथ में, all we need is to decide on this last point which we are waiting। 1 minute 45 seconds left on the clock and there you go। इसके रॉस एक और किल लेते हुए एक्सकैली गॉड की जगह पे या प्रोग्रेस कर रहे हैं। साइड ड्रीम्स ने दोनों प्लेयर्स को स्पॉट कर लिया एंड ही माइट बी गोइंग इन फॉर अ फ्लैंक राइट नाउ। अगर साई दोनों किल्स लेते हुए मैनेज कर लेंगे, उनको एक तो मिल ही गया एंड दूसरा भी मिल चुका है and the win percentage just went into the favor of एक्सकैली and Sai with the double kill coming in from Sai Dreams। ये नाम तो काफ़ी पॉपुलर था बैक इन द डेज जब CS खेल रहे थे, साई ड्रीम्स, और उन्होंने साई ड्रीम से अभी साई प्लेस साई मारेगा ऐसा नाम चेंज कर लेना चाहिए बिकॉज इट्स नो मोर अ ड्रीम, ही इज बैक इन द एक्शन। बिल्कुल, एंड जैसे कि आप देख रहे हैं अभी भी देयर इज अ स्लाइट चांस ऑफ काली एंड साई विनिंग दिस थर्ड राउंड एंड मेकिंग द फर्स्ट मैप इन देयर हैंड्स, बट इट्स गोइंग टू बी स्किल्स हु इज गोना गेट टेकन डाउन। यहाँ पे वेपन्स का एडवांटेज डेफिनेटली मिलने वाला है, बट रॉसी हैज स्पॉटेड साई ऑलरेडी एंड काली को यहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा। साई इज जस्ट वेटिंग कि कितनी जल्दी उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है। एसके रॉसी एंड स्किल्स दोनों प्लेयर्स इतना अच्छा कंबाइन करके खेल रहे हैं तो विन परसेंटेज गोइंग हाई अप टू 79%। यहाँ पे प्लेयर वेट कर रहे थे, काली इंतजार कर रहे थे, यहाँ पे दोनों प्लेयर्स को टेक डाउन करेंगे। हेल्थ शॉट में इनको मिल चुका है एंड ही विल इमीडिएटली बी हीलिंग अप टू फुल एचपी। यस, बस 20 सेकंड बचे हुए हैं, but I guess the sides have changed, the tables have turned and इसके Rossi getting a kill will immediately change it, but I guess फिर से हम favor एक्सकैली साइड के हाथ में जाते हुए no matter how hard you try, इसके Rossi is doing the best। 12 seconds and there you go, इसके Rossi's team will definitely win the first map and looks like मेरा prediction almost close था, but एक्सकैली से unfortunately digital archives नहीं कर पाए and of course इसके रॉसी का नाम clickbait दिया हुआ गया and skills as the pain train because it's been getting a lot of frags I believe। Absolutely, like skills इतने टाइम बाद भी like you know like आप सिर्फ skills की बात नहीं कर सकते। all these four players, all these four teams, all these two teams playing together and being so very dominant about their gameplay, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मज़ा यहाँ पे प्लेयर्स भी उठा रहे हैं गेम का एंड डेफिनेटली हमें भी आ रहा है बिकॉज अगर आप देखेंगे इट इज जस्ट गोइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। वेल अगर आप बात करेंगे ये जो मैच का प्रोग्रेशन था,
काफी ज्यादा आप कह सकते हैं स्लो प्रोग्रेस मैप था. I was not expecting such kind of a slow gameplay because qualifiers में it was not like this. It was just players hopping around, jumping around, going for the skills multiple times. But यहाँ पे players सोच रहे थे, and this is why they are the OG players. They know exactly how to function in these pressure moments, and वही हमें देखने का मौका मिला. SK Rossi and Skills, they have claimed the first map. Well, आपको क्या लगता है जो सेकंड राउंड आने वाला है, that's going to be on a different map here? क्या वो जीत के यहाँ पे 2-0 के साथ साथ मूव ऑन करने वाले सेमीफाइनल्स की तरफ? एक तरह से वो भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि एक्सकैली और साई ने उनका बेस्ट ट्राई किया, उन्होंने एक राउंड ले लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट तक उनका बैलेंस था, वो लीड कर रहे थे 73% पे, बट एक किल एसके रॉसी के हाथ में गया विच लेड टू द विन ऑफ द राउंड फॉर एसके रॉसी. तो मैच तो काफी क्लोज था. द थर्ड राउंड वाज वेरी क्लोज फॉर बोथ ऑफ द टीम्स. तो मुझे लगता है कि सेकंड मैप में शायद से एक्सकैली और साई जीत सकते हैं, एंड थर्ड मैप तो हमको देख के डिसाइड करना पड़ेगा बिकॉज दोनों की दोनों टीम काफी अच्छे से खेल रहे हैं फ्रैग आउट के अलावा. बट दैट वन फ्लैंक फ्रॉम साई which gave almost 90% of the winning chance for them. Absolutely. That was a beautiful, make over there, make of the game. आई थिंक अगर नेक्स्ट जो मैप आने वाला है, अगर वहां पे साई एंड काली जीत जाते हैं, थर्ड मैप देखना बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला, बिकॉज इट्स स्काई प्लेटफॉर्म. एंड आपको पता है कि हु डजंट वांट टू एंजॉय दोस जंप पैड्स. स्काई प्लेटफॉर्म एक अकेला मैप है जहां पे आपको जंप पैड्स देखने मेरा फेवरेट मैप बन चुका है, नाम से मेरा फेवरेट मैप बन चुका है ऑलरेडी. दैट्स व्हाई आई थिंक हमें तीसरा मैप आज देखने का मौका मिलना चाहिए. बट फॉर दैट एक्सकाली एंड साई बोथ हैव टू कंबाइन. ऑफ कोर्स दे आर कंबाइनिंग, दे आर प्लेइंग टुगेदर, बट दे नीड टू विन द अपकमिंग मैप हियर जो सिटी प्लेन्स पे खेला जाएगा. एंड आई थिंक जो नेक्स्ट मैप होने वाला है, इट इज आल्सो प्रीटी कॉमन यहाँ पे सभी प्लेयर्स के लिए हो चुका है. दे हैव प्रैक्टिस, जो अपना अपना ग्राइंड कंप्लीट करके आए हैं यहाँ पे खेलने के लिए. बट स्किल्स, आई बिलीव एसके रॉसी से ज्यादा डोमिनेशन हमें देखने का मौका मिला है स्किल्स की तरफ से. यस, एसके रॉसी उन्होंने बहुत ही ज्यादा डोमिनेंस दिखाया था. मैंने स्काउट का इस्तेमाल देखा था शुरुआत में, फिर हमने फमास पे लिए स्विच कर दिया था, M4 पे लिए स्विच कर दिया था, एंड ड्यूअल बैरेट्स वाज सच अ ग्रेट हेल्प. जब हमारे पास एक SMG होते हैं एंड उसके साथ साथ आप एक पिस्टल चूज करते हो जो सेम तरीके का से रिएक्ट कर सकता है जैसे SMG कर सकता है, एंड ड्यूअल बैरेट्स ऑफ कोर्स दे हैव मोर एक्यूरेसी विद द बुलेट्स, एंड इट गेव मोस्ट ऑफ द टाइम इन राउंड्स फॉर एसके रॉसिस टीम. एंड जिसको उनको 2 पॉइंट सिक्योर करने का टाइम मिल गया था, एंड दे वन द फर्स्ट मैप सो इजीली. डिजिटल आर्काइव्स, मैं इस पे सेकंड मैप की काफी इंतजार कर रही हूं बिकॉज इट्स गोना डिसाइड इफ वी आर गोइंग टू द थर्ड मैप और नॉट. एंड एज वी जंप इनटू द सेकंड मैप, इंटरेस्टिंग मैप इज गोइंग टू बी. पहला राउंड चालू हो चुका है. अभी के लिए मुझे लगता है कि एक्सकैली ऑलरेडी अपने चांसेस इंक्रीज कर रहे हैं. 2 किल्स ले चुके हैं शुरुआत में. अगर आप बात करेंगे एक्सकाली, आप देख सकते हैं कि टिकट्स आर ऑन द स्क्रीन राइट नाउ एंड बोथ द टीम्स आर स्लोली ड्रॉपिंग द टिकट्स. आई थिंक यहाँ पे रॉसी एंड स्किल्स दोनों इंतजार. आई एम नॉट श्योर इफ स्किल्स इज देयर इन द गेम बिकॉज मुझे यहाँ पे AFK नजर आ रहा है. मे बी ही इज डिस्कनेक्टेड एट अ पॉइंट बिकॉज मुझे यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिख रहा उनकी तरफ से. एसके रॉसी, ओके देयर इट इज, स्किल्स इज बैक एंड यहाँ पे द वेपन्स आर हियर, द AWPs आर हियर. USP वर्सेस AWP. I'd bet on the USP even now. USP और AWP दोनों इतने अच्छे कॉम्बिनेशन है. उप्स, लगता है कि एक हमारा प्लेयर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, बट कोई बात नहीं, हम फिर से चालू कर देंगे. एंड ऑफ कोर्स के रॉस वापस आ चुके हैं, एंड द एडवांटेज कीप्स गोइंग इन एज अ 1-7 मैच. बट आई गेस एक्सकैली गॉड इज गोना इमीडिएटली आंसर बैक, एंड एक्सकैली काफी कंफर्टेबल से खेल रहे थे मास अगर आप देख रहे हो तो. एंड ऑफ कोर्स साई ऑफ निकालते हुए एक मैडमैन बीस्ट हो जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स ही इज कंटिन्यूइंग टू बी दैट बेस्ट. एंड एसके रॉसी USP देख के तो मुझे एक अलग तरह की वेपन की याद आ जाती है जिसकी नाम मैं पता नहीं ले नहीं सकती हूँ, बट जब मैं ऑफ देखती हूँ तब मुझे लगता है कि साई इज व्हाट शुड आई से, he is a monster with an op, the merciless guy who just doesn't let anybody go. As we speak, one no scope, another one coming in the hand. Well, आप देख सकते हैं कि साई he is coming in with those dominations and I believe यहाँ पे शायद रॉसी का डिस्कनेक्शन हो चुका है लॉबी से. I'll just be confirming it with League of because आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सकाली को भी यहाँ पे किल निकाला गया है. And look at that flick, like this guy with the op, like मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले कि साई को op दीजिए, साई मारेगा, and लगातार वही वो करके दिखा रहे हैं. हाँ, उन्होंने अभी तक क्वाड किल ले चुके हैं, एंड अभी एक्सकैली
भी ऑफ पिक कर लिया एंड अभी तो वो रोक तो नहीं वाले हैं एंड skills लगता है कि he is comfortable with the M4 itself and Excali another one with the AWP quad kill for Sai and a double almost a triple for Excali and yep he is getting that another one on towards skills पता नहीं लगता है कि इसके रॉसी यहाँ एक ही हो चुके हैं बट we will look into that later but फिलहाल के लिए तो Excali और Sai के दोनों ऑप से काफी मजे ले रहे हैं यार वेल आप कह सकते हैं कि ऑपरेटर एक्शन अगर यहाँ पे आपको देखने का मौका मिल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं वेल इट इज जस्ट गोइंग ऑन अ क्रेजी लेवल जैसे कि आप देख सकते हैं एंड साई की अगर आप बात करेंगे उनके पास वापस ऑफ आ चुका है एंड एडब्ल्यूपी के साथ साथ ही जस्ट गोइंग क्रेजी स्किल्स के ऊपर वापस एक यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इट्स 40-degree flick, I'd like to say it that way, but he is also doing a pretty good job. अगर आप बात करेंगे यहाँ पे स्पॉट करेंगे रॉसी साई को ऑफ होने के बावजूद भी यहाँ पे किल लेके जाने वाले हैं साई के ऊपर and that is what Rossi is all about. Yes, SK Rossi is all about the frags and he's definitely gonna pray to get the most of it. As we see the USP, oof, instant answers coming in from Excali and Sai, a double kill with the UMP. Okay, I've almost forgotten about this gun, Captain. It's been a while I saw and there comes the most dangerous gun and the best gun for the new players. The P90 comes in the action. A lot of fun guns to be seen in Sai. Looks like it's just not the op with what he's good at and also the UMP as Excali picks up the deagle. Well, it's going to be interesting watching Excali holding off that deagle and of course it will lead us to the first round into the favor of Sai Dreams with 13 kills in his hands. As we speak of it, पहला round तो जीत चुके हैं Sai Dreams already. And I feel like पहला round Sai के हाथ में जाते हुए we might just see the match going into the favor of them and we might see the third map. Of course it's my favorite, the Sky platform. Well, उड़ना पड़ेगा आई थिंक हमें उड़ना ही पड़ेगा वेल सेकंड राउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशिएट हो चुका है जैसे कि वी आर जस्ट इनटू द मैप हियर फार्मर्स के साथ साथ यहाँ पे यूएसपी जैसे कि आप देख रहे हैं एंड मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहने वाला हूँ कि ये जो मैप प्रोग्रेस हमने देखा था पहले मैप के ऊपर डिजिटल आर्काइव्स इट वाज सो स्लो पेस्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स नॉट गोइंग फास्ट इट्स गोइंग प्रीटी क्विक यहाँ पे एक के बाद एक आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन kill respawn kill it's just going on and Sai come on please chill like एक के बाद एक kills how is he making it happen like that's Sai for you that's just the in-game monster that you get known as Sai yes मतलब पहला मैप में तो उन्होंने जाने दिया था पहला मैप इसके रॉसी और इसके हाथ में but I guess he won't let it go in the second map aggression तो तुमको clearly दिख रहा है साई के बीच में वो UMP लेके मारे एंड उन्होंने ऑप के साथ जो कॉर्ड किल लिया था मुझे it's still flashing on my screen the no scopes and of course deagle हाथ में पकड़ते हुए Excali एक तरीके के different vibe में चले जाते हैं skills अपने हाथ में काफी प्यारा गन रखे हैं we have Mactin from skills and Excali is gonna upgrade it to M4 unfortunately Excali with the op will be taking skills down and op हाथ में रख के that means a monster without guards and I guess that doesn't matter until SK Rossi is alive gets himself a double changes the table and now he might be looking to get the op unfortunately he can't claim that so he's moving forward with the M4 gets himself a triple will it continue no Excali will break his momentum right there Excali is moving slowly forward the footsteps are very clear at this point वेल मैं तो यही कह सकता हूँ कि पहला राउंड जीतने के बाद थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रॉसी एंड स्किल्स दोनों थोड़ा गुस्सा हो चुके हैं बिकॉज़ द वे दे आर डोमिनेटिंग ऑन द प्लेयर्स रॉसी विद दैट इनसेन फ्लिक ऑन टू Kali and skills coming in and closing up on Sai. This is such an amazing comeback, I'd like to say, from the side of Team Skrills, and they are destroying Team Excali Sai at the moment. AWP आ चुका है रॉसी के पास we know what kind of a great guy is फिर से स्पॉट करेंगे and look at that quick scope coming in from the side of SK Rossi will be hitting one onto the head here skills को यहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा by Sai and अभी भी आप कह सकते हैं कि SK Rossi with the top he's going slow he's waiting for those peaks to happen spot करेंगे look at that sneaky play look at it he's just waiting he's gonna drop down drive by also no
No, how can you do that, Rossi and Sai? वो गलती नहीं करेंगे. यहाँ पे एक टिकट लॉस होने वाला है वापस से स्किल्स के ऊपर. I would have gone crazy if that no scope actually got connected, but SK Rossi, he whiffed hard on that one. But कोई बात नहीं, पहला मैप उनका hand में already है, and maybe just because we want a third map, we might see a third map. It looks like Skills is standing really close, and of course he will take Excali down, which means in the matter of seconds, Excali's team has just lost the win percentage. 81% for Team Skills to win, and with that kill coming in, it will make it clear Skills will take Excali down with a point lead right now. The time is clicking down. Every second is spent away from the particular range, they will be losing more points. SK Rossi will be taking side dreams down and maybe another one, but Skills, look at Skills, he fears nothing. He doesn't fear, battling against the enemy in the open. He just wants to get the kill done. Well, what is more interesting is that कि आप देख सकते हैं लगातार टिकट्स यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं एक्सकालियन साइड की टीम के लिए. Now it's down to just 10 and 9 tickets for the side of Skills, and they are almost on the verge of losing. I think it's going to be the second round which is claimed by Excalian side as well, and this might be a 2-0 domination coming in from the side of Excalian side. That will put us at a point जहां पर चल के हमें थर्ड मैप भी देखने का मौका मिलेगा, and I believe it is What? Okay. Oh my god, it was down to the last second. It was down to the last ticket then. Maybe we spoke too early, but that one last kill changed the tables, and that's Team Skrills walking away with the second round. Tickets to drop ho rahe the, but I guess that didn't let change anything about the aim that this team has. Skrills, yeah, I mean नाम भी काफी fancy रखा हुआ है. SK Rossi, SK Skrills में skills डाल देंगे, and that's Skrills right now, and Excali. Okay, Skills को टेक डाउन करते हुए साइड ड्रीम्स अभी तक स्पॉन नहीं हुए हैं, and so is Skills. SK Rossi getting another beautiful headshot with the deagle, which is currently looking like Team Skrills को भी थर्ड राउंड मिल सकता है, बट हमारे पास 4 मिनट का टाइम है, which gives enough time for Skrills to scope in and get that headshot with the scout. Well, अगर आप बात करेंगे इस राउंड का जो प्रोग्रेशन है, इट्स गोइंग ऑन. मैं कहूंगा कि एक 50-50% चांस अभी भी बना हुआ है. इट्स देयर ऑन द स्क्रीन एज वेल, बट आप देख सकते हैं कि टिकट्स यहाँ पे सिमिलर रेट पे लॉस हो रहे हैं. नन ऑफ द प्लेयर्स हैव एक्चुअली गॉन इन फॉर दैट एरिया कंट्रोल बिकॉज़ दे नो दैट प्लेयर्स आर वेटिंग, एंड स्किल्स यहाँ पे इंतजार कर रहे थे. साई का किल लेके जाने वाले हैं. दैट ड्रॉप्स डाउन अनदर टिकट एंड इमीडिएटली ट्रेड लिया जाएगा काली के द्वारा. नॉट जस्ट वन, इट्स गोइंग टू बी अ डबल फॉर हिम, एंड ही जस्ट स्टेज ऑन पॉइंट. ही इज लुकिंग फॉर दोस प्लेयर्स ट्राइंग टू कम इन एंड क्लेम दैट पोजीशन once again, but it's Sai again cleaning up onto Skills. They're trying to pick up the close range guns, mostly for Mars and UMP, but UMP is also a very good gun that I've heard about. UMP, it's mostly used in the post by rounds, and I feel like UMP के साथ भी हम यहाँ कुछ miracles कर सकते हैं. On the other hand, SK Rossi Excali को take down करते हुए 73%. Well, the time is clicking down. Excali is not only losing the win percentage, but also the points in his hand. 63 points. It's just a point advantage for Skrills. They're just 1 point away from losing it all from Excali. And look at SK Rossi again. Losing shots. It's the second time, but don't worry, Skills has got your back. It's gonna immediately retrieve the kill back and balance the percentage scoreboard. No one saw that, Rossi. Trust me, no one saw that. But jokes apart, होते रहते हैं ऐसे छोटी-छोटी गलतियां. But as we can see कि जब मौका मिला है, मौके का यहाँ पे फायदा उठाया जाएगा Skills के द्वारा, and he's gonna just destroy Sai with that UMP. Skills की अगर आप बात करेंगे, like हमें पिछले मैप में भी देखने का मौका मिला था, the way he was functioning alongside Rossi. More, it seems more like कि आज की शाम Rossi has gone into that support role and Skills is doing that front line assaulting, as you can see. Yeah. He's guarding SK Rossi. It's more like him guarding SK Rossi, not letting anyone get through SK Rossi's screens. But looks like, यहाँ पे एक interesting moment आ चुका है जहाँ percentage is काफी influctuate हो रही है, and I feel like the points are losing, but Excali is not going to stop anytime soon. जब तक लास्ट सेकंड तक होप रख सकते हैं. हमने पहला राउंड में भी देखा था, लास्ट सेकंड पे टेबल्स डाउन हो चुके थे. एक किल कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, एंड आई फील लाइक हम चाहे जितना भी प्रेडिक्ट कर ले, अगर लास्ट सेकंड में किसी ने भी किल ले लिया तो वो maybe the opponent can win. Even a percent matters here. Even the slightest point
might give you the advantage. And look at Excali. Once again getting taken down by SK Rossi. The percentage is going into the favor of Team Skrills right now. Side Dreams immediately bringing them back to the senses with 51%. बस 2% का फर्क है Excali side versus Team Skrills. Well, it's just 2% के साथ साथ I can say it's like a 1 second difference on the basis of that tickets. It's no difference actually because दोनों ही teams are dropping the tickets at the same rate. अगर यहाँ पे last second तक पहुंचने पे एक ticket बचता है, the tiebreaker is going to be one particular location that gets activated. Whichever team touches that location first will be getting the victory of this particular round. अभी के लिए the lead is still on to Excali's team. As you can see, it's gonna go down to the last second once again, I believe, Elika. Yeah, 45 seconds on the clock, and it's already brought down to 6 points. And Excali's team might have a really good chance at winning this map, which might lead us to the last map. And I'm eagerly looking for it. And धीरे धीरे से मुझे लगता है कि percentage तो Skrills के हाथ में, but seconds जो है वो नहीं है. That means Excali inside will walk away with the second map in their hands. As we've spoken of, we wanted to get the third map, and of course we will be seeing it. Well, skills नाम में है, skills game में है, and I think they have shown us that they can win in a 2-0 domination, and वही हमें देखने का मौका मिला है. Well, the comeback that Team Skrills showed was really amazing. Like पिछले मैप में हमने देखा था, डिजिटल आर्काइव्स में हमने देखा था, पहला राउंड it was won by Skrills, second round it was won by Kali and Sai, and तीसरा राउंड आते ही वहां पे it was again Skrills and Rossi once over all over again. अगर आप बात करेंगे दूसरे मैप की, this map it was a sheer domination coming in from Sai particularly. I'll not say the entire team of both the players coming, but Sai operator के साथ साथ he was just shredding people down. But when the second round popped in, it seemed like Rossi and Skills, they were on a different level. 2 rounds लगातार जीते पहला राउंड हारने के बाद, and they have actually secured the first 2 maps. That's a 2-0 win for Team Skrills, and they are gonna move on to the semi-finals. Yes. That's OG Reunite match number 1, quarterfinals number 1. Well, that was quite unexpected. मैं expect कर रहे थे कि साई और Excali में भी last second में थोड़ा उनको advantage मिल जाएगा चांस पे, but unfortunately नहीं मिला. But अच्छा लगा मुझे साई और Excali को साथ में देख के, and of course SK Rossi and Skills, they have been that deadly duo together for a while now. Absolutely. And अभी वो आगे जाएंगे सेमी फिनाले पे. अभी इससे ज़्यादा इंटरेस्ट तो मुझे सेकंड मैच पे है. Well, I know who is coming down in the second match. I am pretty sure everybody is. Everybody sure? Well, let's have a little bit of memory recapitulation. तो दर्शकों से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को याद है कि ब्रैकेट्स में कौन सा मैच हमने दिखाए, लाइक कौन से प्लेयर्स को हमने दिखाए थे, एंड शेड्यूल में कौन से मैच को हमने दिखाया था फॉर द सेकंड ओजी रीयूनाइट मैच, देन डेफिनेटली आप बताइए अभी चैट सेक्शन में कि which are gonna be the players who are gonna come in next as competing each other. Well, मैं तो एक चीज के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करने वाला हूँ. That is going to be the Red Bull Flick matches. But OG Reunite, I believe एक चीज हमें पता चल चुका है. Firstly, the players are going to test each other. That has been there on the map of Digital Archives. After that, when we switched over to the second map, it was the sheer going in, shutting the opponents down. Yeah, second, I pretty much expected कि second match Excali और साई जीत जाएंगे because वो back to back dominance दिखा रहे थे. And जब साई ने ऑप उठाया था, उन्होंने back to back kills लिए थे. And Excali ने भी same चीज किया था. SK Rossi ने थोड़ा shots miss कर लिए, but I guess it was it got covered with all the rifle kills he got. He might have missed 1-2 shots, but of course Skills has got his back, and definitely वो काफी बढ़िया चांस था to see the third map. It was very close, but tickets का points भी हम हाथ में रख के, and with the kills and with the win percentage, I feel in overall it was Team Skrills who won. मैं एक प्लेयर को देखने के लिए बहुत ज्यादा, एक्चुअली नॉट वन प्लेयर, मैं 2 प्लेयर्स को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. वन ऑफ देम इज नो डाउट Venom. The Yes, other one, Venom. I'll leave it to your guess, Alika. Who do you think is the second player that I'm going to be excited for? Deathmaker. There she is. Yes. Well, that's a Or- spot on guess there. Yeah, like we I know mean, he's one of my favorite players. that he Like has been one of the best players in India once upon a time. Yes. Like we know him for his insane level of accuracy. Death maker.
I guess he was more famous in CSGO with the name of Sunny Das, aka Debajan Das, like Yes. more than Deathmaker. And he told me, like, once when I was, normally having a conversation with him, he said that, I love being called Sunny Das and Debajan Das because that's how I started. That's what was my first nickname I had was Sunny Das. And then he brought down the name Deathmaker, which went wild like in a forest. The name itself depicts a lot. He makes the death happen. That's him. Like he makes the deaths happen. That's how he has named himself. But even today, when the players are actually playing together, when the teams are playing together, players don't like to call him DM. He likes being called Sunny in the Sunny game, does, and that's yes. just amazing. Well, let's take a look at the schedule once again. And as you already know, Skrills have secured a 2-0 domination over Excalibur versus Sai. Skrills are going to move on to the next phase, that is the semi-finals, which are going to be happening tomorrow at 2 p.m. And if we talk about the next upcoming match, well, it's going to be Team Antidote versus Farmix. And what do you think of Farmix? It's going to be like, it's going to be absolutely amazing to find out because it's going to be Deathmaker plus Antidote coming in, and it's going to be right to Ace and SnrLx coming in their opponent. So I'm picking the sides this time first because like I said, I'm excited to see Antidote. I'm actually excited You to know, see TM. I wouldn't name it Team Antidote. I would say it's the Bengali boys. Oh, it's the Bengali boys, absolutely. Like I was, thinking about that too. But yeah, it's the Bengali boys. But let's address them as DM. What's more interesting? It's Team Bengalis versus Team Mumbai because we have right Oh, Ace yes. and SnrLx. And SnrLx, this man brings up a lot of memories back from CSGO, even before where, when Antidote and Deathmaker were in the CS scene. SnrLx is that one guy who's always pampered with a lot of, with a lot of experience in the CS, and so does Right to Ace. It's just not one game who he has dominated in. Well, there's a guy named Right to Ace. I'd like to do a little bit renaming of that name. He's not Right to Ace. He's Right to Clutch. Let me tell you that. And Yes. this guy, I think DM and Anti, both of the players will be, a little bit. I'll not say scared, but they need to be careful when they are handling this guy in a duel. This guy, I have seen him pull off, 1 HP clutches on a different level. Like, he has been one of the most influential players in India over the past year in the world of PC gaming, of course. And let me tell you, be it CS or be it any other game, Right to Ace is known as Right to Clutch. But yeah, there's Deathmaker and Antidote to Edward as well. If Right to Ace wins this particular match, I would like to rechange his name to Right to Win. Right to win. Well, right to win, Yeah, right to because clutch. he comes down with he comes down with that, with that characteristics in his head that he's a winner and he never gives up till the last moment. No matter Absolutely. how many people are alive, I'm pretty sure a lot of audience has clearly what I'm speaking of. That he is that guy who has the potential of bringing down an entire team together single-handedly. What we can do is if we ever have him here on the interview desk, we can make that request to him. Don't you think that will be like, the Yes. best thing to do? That's true though. Okay. And one more interesting fact about Sunny and Antidote playing together is that it's been a long time since they've gathered back. Oh, yeah. And now having the Bengali boys reunited, it's going to be a lot of action against Right to Ace. I feel like all these people, them together as a really good friends, but when it comes down a 1v1 or a 2v2, I'm clearly predicting it out that Deathmaker and Deathmaker and Antidote might have a higher chance. Oh, I'm using a lot of names for Deathmaker, man. He has too many names. There's no doubt about it. Like, I'll say these two boys, particularly Anti and him, like, it's wrong to call them boys. Of course, they are men, but yes, they are the Bengali boys. So, We can actually, if we ever had a chance, to name the team names according to the players, we would have really fun names like the Bengali boys. absolutely. And if it was, Amitarasu playing or anybody, I would say, Mumbaikers or the Gujju gang, something like that. The GG, the Gujju gang. Amitrasu's playing. Let me just tell you that. Okay. So, This is it's interesting. going to be interesting to watch, who he's playing along with. Well, let me tell you, he's going to play with who?
That is a big question. I'm not going to reveal I it to really you don't want to guys know yet. the answer so soon yet. I want the suspense to keep flowing through so that all the audience will be watching it for a longer time. I'm excited for the second match and especially about the map Veto. As we saw Digital Archives and the other map, I feel like Sky Platform might be the first pick that these four teams can be going in for because we have two oppers in the one team. That's the Bengali boys. Anti and DM, they go way back. There's no doubts about it. They go way back. Well, the round has initiated. The first map has come in again. Well, the same flow of maps is going to be followed. जैसे कि आप लोग जानते हैं पहला मैप आने वाला है Digital Archives. The second map is going to be there as well, and the third map is going to be a Sky Platform and Antidote Man. Like this name, Antidote Man. It is a very old name that he has been using, and recently he has renamed himself everywhere with this particular name. Yes, Deathmaker HF. Well, Deathmaker HF. What does it mean? Deathmaker have fun? Or have fun? Are you thinking like Deathmaker is gonna have fun? But I don't think his opponent I think he's also popular as DM King. Yeah. Yes, DM King, the Deathmaker King. I would love to call him Sunny. Thus, it brings me back these CSGO days where he quite went in every newspaper article in India at a point. As we come down, it's going to be a slow and steady win race as Rightways already secures a kill onto Deathmaker through the smokes. Okay, Rightways being the nerd guy who's going to use each and every ability in his hand, either it be a flashbang or a smoke, and Deathmaker immediately making this scores equalizing by taking SnrLx down. But there you go, another one. Oh, Antidote actually. Wait, Antidote fell down and he's gonna be, dying unfortunately. Little does he have idea that we have loopholes. Don't break your legs, Anti. Like, I know it's painful, so don't break your legs. Well, Deathmaker, he is not gonna stop. He's not gonna stop at all. Antidote, he's back, respawned, and look at the win percentage. Like, you can tell alone by looking at the win percentage. 73% win percentage coming in for this team here. Team Antidote, they are just shredding people down. Deathmaker once again spotted, but SnrLx, this guy, he just went in for a double and he just made it happen. No, right to his. He fell again. Be careful while you are walking on from that place. A little bit of an oops moment over there. I'm pretty sure Rightways will never be using that again. Maybe he might be. SnrLx is gonna use the flash now. Oh, that was a grenade, and I feel like Antidote and Deathmaker, they are trying to win the game. Look at them. They're actually using the proper tactics on how to be securing the rounds. They are standing on that ground. They will be securing most of the points. And now that their win percentage is down to 73%, it has to be Rightways and SnrLx walking into the courses of Team Antidote. They're checking each and every corner possible. Deathmaker was famous with the AK and AUG. Him and Hellfighter, both of them, they used to use a lot of AUG back then in the game. And I guess Deathmaker is back to the basics, back to his own natural habitat where he's using AUG. He finds the frag on towards Rightways, just increasing the percentage of the win even more. Well, they are just gonna fall along with their win, I guess, because the win percentage tells you alone that how much of a dominating win is being from the side of Antidote. He comes in again, takes down SnrLx, and Rightways, they need to do something. There's no chance they're gonna get it. They do not get this round. Antidote once again finding one onto SnrLx, and I believe the position that's being held down by Anti at the moment is not giving a single chance for Team Powermix to function here. Yes. Well, most interestingly, Team Powermix, they haven't been, showing a lot of intense skills. I really want them to, answer back immediately. But I guess Antidote in Team Deathmaker, they're just making all the difference in the world right now. Rightways is slowly trying to get a peek. He's going to be jumping up. Once again, he's going to break his legs. Rightways. Such unfortunate to him. He's just trying to still figure out the map. He thought of, slowly dripping down, but I guess it just slipped a little too much and he's gonna be going down in the flames as SnrLx is all by himself. Yep, we have Rightways back in the action. I'm pretty sure Rightways is never gonna go on to those things back again. He's never going to try to even walk on those. It's been more than 2 times that he killed himself. And there you go, the first round definitely goes into the favor of Team Antidote with absolutely a 50% more winning chance in the entire round.
Well, there's not many kills to work with, so that's around, overall you can say 8 kills have come in from the side of Antidote. That's 8 tickets lost from the side of Team Powermix, but they're doing good. If you talk about the overall performance of Team Antidote, it's basically like they are fusing together, they're communicating and playing. Seems like Farmix, they are a little bit lost, like, they are still trying to get a hold of the game. And as you can see, right away, spots a player in front of him, and he will be taken out immediately. That's Deathmaker down. And SnrLx and right away actually combined together to get that player down. They need to get the control of the area, and Team Farmix, as of now, are doing a pretty good job at that. Yeah, Team Phoenix, it's like now they know how to play the game and definitely gonna outplay Team Antidote. They already got the entry frags, the 2 opening frags. With the 73% of the win chance, they'll be moving forward right away, trying to find a frag. SnrLx is gonna use the best of his abilities, flashing down for right to waste. Deathmaker picks up a Mac 10. Well, Mac 10 is a very interesting gun, I believe. And playing inside the range is gonna give them a lot of advantage. Of course, the tickets are gonna be keep increasing. Right to ways and SnrLx are trying to find. They find one right to ways, confirms that kill on towards Antidote, which leaves a greater percentage for them to win. And maybe it's time that right to ways got the second round, and we might be seeing the third one as well. I want to see the third round. I want to see the third map after all, and I believe third map is something that we need to be waiting along for a long, long time. Deathmaker finds one onto right to is the dual Beretta is really coming into play. Time to go in for another one, but SnrLx having the advantage of the weapon will be shutting down Deathmaker, but anti and combined takedown SnrLx, and I believe it's there's still enough time for Farmix to step back into the game. It was the worst possible time for him to be, reloading the gun straight in front of the enemy. But yeah, sometimes you run out of the bullets, as we have UMPB right now. But I guess Deathmaker loves to handle with the dual barrels, which means SnrLx will be getting that SMG advantage against Deathmaker. As we move to the Galils, and still a FAMAS in the hands of Antidote. This round is getting entirely in the one-sided, favor in the hands of right to ways. They're getting the kills back to back. Smokes are being used, flashes are being used, and looks like Deathmaker with the cheeky shots back again is gonna only be showing his heads. And it's very hard to connect a headshot with an SMG, especially in a long range fight. Absolutely, and DM once again, Deathmaker, like DM King. I think that should be the name. Like, you don't have to worry about it. And out of a sudden, you can say composure. Farmix, they are lost. They have 19% win percentage right now. So Antidote is basically Team Antidote is dominating at this point. But SnrLx finds one onto DM, gets the control back in their favor, and Farmix, they are looking really, really strong to step back and get this map into their hands. At least get this round into their hands so that they can have a fighting chance of getting this overall map in their name. Well, 1 minute 53 seconds left on the clock, which means that the winner of the round will be declared as the time closes down. Just a few seconds left away. An Antidote and Deathmaker, both of them are still left in the hands of the Galil, where right to ace and SnrLx have already upgraded to M4. Well, looks like the rifle against the SMG, the rifle wins as right to ace takes another kill. And it's going to be Antidote once again in the Galil. Deathmaker goes down. It's a entire one-sided thing coming in. Antidote is trying to get down the advantage. He's going to be standing inside the range right now. He's trying to refill the position. And as you can see, the way the map is getting carried out, like firstly we saw in the initial round, right to was trying to get those kills on board, get that control, but unfortunately Deathmaker, he's just gonna line up 2 of the players in his crosshair and gonna shut both of them down. With that, the win percentage gets high up onto Team Antidote's favor. Farmix need to do something. They are falling short of time here. 45 seconds to go. They are almost onto the doorsteps of a victory, but can they pull off the round, or they're gonna lose this entire map from their hands? Oh, SnrLx so close to be moving down. He's trying his level best to control himself. And SnrLx, are you gonna go? Yes, he successfully made it to the ladder. But I guess it's too late. He has both of the players. He might be taking both of them in a single row. 20 seconds left. That magic movement by SnrLx is gonna change the win percentage in the hands of Powermix right now. An Antidote, of course, he'll be going down, and right away he'll be taking him down. But
at the end of the game, the tables have turned. It's going to be Team Antidote winning out the second round as well. And to my surprise, the prediction has totally come out true that the Bengali boys have made it once again. Well, this is what the 2v2 flick is all about. No matter how much of a win percentage you are having at that current moment, because when two of the players are downed and both of you are actually, let's imagine it's Elika and Captain versus X and Y. So if X and Y have just eliminated us for that particular moment, they are gonna have a higher win percentage. Doesn't matter that the number of tickets they have are way more than that we have. They Yes. might be having 5 tickets left. We might be having 80 tickets left there. So yeah, of course they are on. You can say on the verge of losing that round. That exactly showcased at this moment. Right to Ace and Powermix, when the round got initiated, they held their own. They were waiting. They played calm and they were winning. But once Deathmaker and Antidote got hold of things, there was no stopping them. Yeah, they were sitting down in the range. They were letting right away and SnrLx walk to them, and they played it smartly, I guess, both of the rounds, which means they will be walking away with the first map, that is Digital Archives. And I'm excited for the second one because once the game's main intentions have been understood by right away and SnrLx clearly now, I believe the second map might be even more interesting and with a little more competition. I feel like if the second map goes into the favor of course, SnrLx and him right to Ace, we might be seeing my favorite map, Sky Platform. Although I haven't seen it, I only saw it in the videos. I've never experienced myself casting it. It will be quite interesting. Well, one thing I can assure you, Sky Platform is way beyond, a level beyond these two particular maps here. The next map, however, it's going to be City Palace once again. AWP. Like it's City Palace. I'd like to name it the map of AWPs because you will get to see AWP domination throughout. And the Bengali boys are gonna have a very, very great chance at this map as well. But the sniping skills of Right to Ace, he doesn't showcase them. He has it running through his body, but he doesn't showcase them. Only when all of his teammates are down in a competitive game, in a 5 versus 5, a first-person shooter game, then he comes in with that operator if it's available, and he can mow players down. Yeah. Can he do it here? Can he do it to Antidote and Deathmaker? Is gonna be a very, very big question this afternoon. That's what the quite a fact right now, that Right to Ace is a very good opper, and now he doesn't showcase it, and he might actually be putting it right now in front of both the primary oppers. Deathmaker is a primary opper for his team, and so is Antidote. And Antidote, I believe he has higher accuracy with any three of the players in the opping field. And I would love to call the City Palace as the map of scope. That's you can see that, and most importantly, the availability of AUG in this particular map is also going to be pretty dominant because we all know how accurate AUG is when you scope down, and that is just amazing to watch. Plus, it's not just a linear way of playing. Well, we are moving into the map here. It's going to be, well, it's not going to be City Palace. It's going to be Sky Platform that we are going to witness here in front of us. And, this is really interesting because the jump pads are available. Exactly. Well, this was the interesting fact that we've been waiting for, and I guess we have arrived at the right map in the right time. Antidote unfortunately came to said, not a problem, we have SnrLx, and I guess everything is going in the favor. The jump pads have been highly used right now. Right to Ace and SnrLx getting 2 kills back to back. And I believe this time Right to Ace team might be having good chance with the tickets. They have a 5-point lead, 93 tickets in their hands, and Team Antidote, they're highly, in the fall right now. Well, they're just gonna come flying, jumping on top of each other, and they're gonna just, mow players down. Right, he's coming in, he's gonna be shutting down multiple players at the time. He's combining with his teammates though, and you can see the variety of weapons in this map. You have a scout, you have a farmmaster, and a DM. He spots one, he gets one, and immediately gets the control of the area for his team. I like the movement of the jump pads, which are almost going in absolute direction wherever we want to go, and it's also giving a nice flight effect for the players as well. Antidote gets one. Looks like the tickets might still be in the favor of Powermix, as Right to Ace and SnrLx have decided to play it smart. Antidote, from one place to another, is gonna jump around. I'm pretty sure that Antidote is gonna love this map, as he is a huge fan of V-Hop.
bunny hops and these kind of jumps. They look fancy, but they give you the advantage as well. Enemies can't predict you flying from one place to another, and I think that's the reason this map is quite famous. Well, 6 kills from the side of Antidote. Powermix having 4 as of now, but still you can see the win percentage. It's favoring Antidote heavily. Well, it should, because there are already 11 tickets down, 12 tickets down. Team Powermix, they need to do something. The control maintained by Antidote on to this point, they're just being confident about it. No one is going to be allowed to even peek at the location held down by Antidote and DM, because they are going to get more down. Antidote gets one onto right to SnrLx, immediately trading him down and going for a double onto DM as well. They still have a fighting chance, but they need to get the control of the area in their favor. Looks like the win percentage might be in the hands of Powermix, but once again, ladies and gentlemen, look at the tickets we are looking. It's favoring Team Antidote clearly with more than a 10-point lead compared to Team Powermix. And right ways, they might be getting the frags, but the entire goal at the end of the day is to stay in that particular range. And right away is trying his level best to stop his enemies. He's getting as many kills as he can, but that's just not enough. With 2 minutes left on the clock, and Team Antidote at the top with 48 points and Team Powermix with 38 points. Well, looks like the chances are going more for Team Antidote. Although the win percentage shows that Powermix might be walking away with this round. What do you feel? With the 10-point lead, it's going to take a lot of time for Right to Waste to get that 10-point lead later. Well, it's like, they're just walking in. Powermix finally trying to get those numbers down. No one controlling the hard point as of now. And you can see, and finally we get to see some utilities as well. The grenades getting popped up. Like, this is the first time I believe we are seeing the use of grenades. We've seen flashbangs getting used, but grenades, well, I think a grenade kill needs to be there. Well, and height and right to waste. The height advantage getting captured by this guy. It's so amazing. Once again, Antidote holding down the ground of the control area, and Deathmaker gets one onto SnrLx. Just 14 seconds more left for Powermix, to bring back how much they've lost. But I guess Team Antidote, they are playing it as the nerds within the range, and it might be Team Antidote walking away with the first round in the second map, because clearly we can see the advantage, and right ways is just not in the place right now. Although they're trying to capture it, I guess Team Antidote has an higher advantage. 40 seconds left, Antidote gets a kill, and right ways will be getting taken down once again. 24 points, 23 tickets, and just 1 second left, and there you go. Team Antidote is gonna win another round. This is what I said. It's just not about getting kills. It's also about the time factor. It's also about the responsibility that you've been given to take the charge of the particular area, and that's what exactly Antidote and Deathmaker have done. Powermix had 19 kills. Doesn't matter. You need to maintain the control of the hard points, and that is exactly what Team Antidote did. They held down their ground, and look at that flip from Deathmaker. All right, TM, you need not to do that. Well, you need to do that if you're going to win, but doing that, and there's someone flying high up in the air and trying to get a kill on SnrLx. Does get what onto Deathmaker as the tickets get dropped heavily onto the side of Antidote, Team Antidote. Powermix, they are doing pretty good for this map, and there's a difference of almost 10 tickets now. Powermix, they are just holding down this point with everything they got, and if this continues, I believe Powermix can be walking away with the second round. Yeah. Interestingly, this time Powermix have learned a lot, and look at their tickets rating. They're already with a 1-point lead. Can you believe that? Not even that. They're increasing it. A 10-point lead, a 20 points lead might be coming in anytime soon. And Powermix exactly knows what to do right now. And Team Antidote, they've revealed the secret to their success, and now it's going to be the time for Powermix that they've received back everything. 95 tickets in their hands, and they have moved out of the range, which might be costing them a lot. 94 seconds left, 94 points for Powermix. And Antidote, they might have a higher advantage of winning this round, but I don't think that's quite clearly what's going to happen. Well, I'll tell you something that, Powermix, the way they started off, it's really strong. But you need to be careful about what you're trying to do, because now they have already dropped overall 8 tickets, as you can see. And, Antidote, they are just going down 1 ticket
at every second. I believe Farmix, they have learned, you can say they have evolved over the previous round as to how they're going to have to maintain control in this particular map, because it's not just about the kills. Getting kills on this map, it's very hard. You need to hold down those hard points, and they are doing it in a very, very confident way. Well, looks like Team Antidote is definitely in a big trouble right now. Team Antidote is definitely in a big trouble right now because they are down with 50 tickets only left, which obviously gives a higher advantage to Team Fummix. And I feel like Team Fummix, they already have been doing their mission correctly, and looks like even more forward, Antidote is trying to go to the range and he might be getting grenaded. And now this is a very smart idea by SnrLx, using grenades to move them out of the position, to move them out of that particular range without using weapons or gunfight. Well, right to ace. This guy flying up and getting multiple kills at a time. Deathmaker finds one onto him and will be trying to get back into the game. Now, the difference this time is of over, double the number of points, double the number of tickets that Team Farmix has got. And Farmix, they are just being so very confident about their gameplay. Antidote dropping tickets heavily now. 30 tickets still remaining in the game. And SnrLx will be taking him down, but right to ace from distance will be getting one onto Deathmaker as well. The trades come through. This is what Sky Platform is all about. You are going to get spotted from highs, lows, from centers, from lefts and rights, and you need to be careful which area you are looking at. Well, पता तो नहीं, पहला मैच जो है एंटीडोट और डेथमेकर जीत चुके हैं, बट लुक्स लाइक दूसरा मैच काफी क्लोज फाइट पे जाने वाला है. 60 टिकट्स फॉर टीम फॉर्मिक्स एंड ओनली 18 लेफ्ट फॉर टीम एंटीडोट. टाइम तो डेफिनेटली उनके हाथ में है नहीं. डेथमेकर और एंटीडोट दोनों के दोनों आउट ऑफ पोजीशन हो चुके हैं. बस 13 टिकट बचे हुए उनके हाथ में. SnrLx अपने आप ही बैक टू बैक किल्स लेते हुए डोमिनेशन दिखा रहे हैं. काफी कम टाइम बचा है एंटीडोट की टीम के लिए. दे माइट नॉट बी विनिंग द सेकंड पॉइंट, एंड आई एम प्रीटी श्योर राइट अवे एक बार जब उनको पता चल जाता है गेम कैसे खेला हुआ जाता है, वो दिखा देंगे कि कैसे हुआ जाता है. Well, right to his distance का जो फायदा he's getting, like it's not something you will be able to do very easily. because आप देख सकते हैं हाई ग्राउंड पे होल्ड करना, उसके बाद जाके मेंटेन करना win, it's not enough. And once again Anti win it in a 2-0 domination. And as we can see, Antidote, they have not just won once with 2-0 domination, they have done it twice. Once on to the map of Digital Archives and now onto the map of Sky Platform. So that's basically the first set getting repeated with less number of rounds played. I'd say it's a 4-0 domination coming in from the side of Team Antidote. Yeah, I mean, I said the Bengali boys together, they make a strong reunion and they have definitely showcased it at their best right now. And उसके अलावा भी जब आप बात कर रहे हैं कि Sky Platform जो jump pads काफी advantage ऐड करने वाले हैं, they did not only create the advantage, they also created the chaos. उनको टाइम ही नहीं मिला गया था कि रेंज के अंदर वो बैठे और कैप्चर करें. एंड द एबिलिटी यूसेज ऑफ कोर्स SnrLx अपना ग्रेनेड्स डालने लग रहे थे, आपका स्मोक्स डालने लग रहे थे, व्हिच गेव देम इवन मोर टाइम टू push them out of the range. And that's what exactly team SnrLx has done. SnrLx and right to ace, but unfortunately वो win नहीं लेके जा पाए because हमारे जो डेथमेकर और एंटी है उन्होंने दिमाग के साथ खेला. नहीं गेम नहीं, हम दिमाग के साथ खेलेंगे कि जो भी लूप होल्स ट्रिक्स होते हैं उन्हें बहुत सही तरह से इस्तेमाल किया हुआ गया है. But imagine the work that was getting done. Like Farmix की टीम ने जो शुरुआत किया था, इतना अच्छा शुरुआत करना. And you should also not forget कि जो comeback दिखाया है Team Antidote ने. Like Team Antidote, they were in a huge tickets disparity, and वहां पर चल के जीत के आना, it is not at all easy. And वही हमें देखने का मौका मिला. It's all about the improvisation that you get to do when you're playing this kind of a game. And CS strategies improvise करना, I think that is the best example you can have on improvising of strategies. Well, Team Antidote, congratulations to you guys. You are going to move on to the semi-finals. That's going to happen tomorrow at 2 p.m. And that brings us to the end of the first two OG reunite matches. And it's not even halfway we have crossed through the day. Yeah, I mean, it has been a quick ride for me, but the ride has still not ended, guys. It's just a break, but don't worry, we still have 2 more OG matches. And of course, the most important part of the day,
the quarter finale of the CS:GO Flicks, and I'm definitely looking forward for them. अंकित पंत ने भी बोला था, मैं I'm pretty sure अभी जो हमारा नेक्स्ट मैच आने वाला है अंकित पंत और रेक्स आने वाला है, अंकित पंत तो फटाफट मार के खत्म करने वाला है, बिकॉज फिर भाई बैठ के बोलेंगे कि मुझे मुझे मैच देखनी है, मुझे मैच खेलनी है और देखनी भी है, तो इसलिए मैं मैच जल्दी खत्म कर दूंगा खेल And के. you know, I can bet he's watching the game right now. I can bet on Yes, that. he वो is. मैचेस देख रहे हैं and वो देखने के बाद ना he is also learning. He is also getting the hang of it. Of course, he has been practicing a lot. But let's just check over the schedule once again as to how we are going to progress through the day, through the remaining part of the day. Well, we have seen two matches, both of which have been dominated in a 2-0 victory. Team Skills यहाँ पे 2-0 के साथ साथ जीत करके आए हैं एक्सकाली एंड साई के अगेंस्ट में. टीम एंटीडोट ने भी 2-0 के साथ साथ जीत हासिल की है Powermix के against पे. Well, really well played Excali Sai alongside SnrLx and Right to Ways, but आज की शाम थोड़ा सा बेहतर खेले हैं Skills and Antidote की टीम. अभी भी यात्रा खत्म नहीं हुआ है आज की शाम का. Red Bull Flick मैचेस अभी आपको देखने का मौका मिलेगा, जो भी प्लेयर्स क्वालिफाई करके आए हैं खेलने के लिए. After that, we are gonna come back with the remaining two matches, the remaining two quarterfinals of the OG Reunite matches. Yes. तो आपको ये दो पर्टिकुलर टीम्स को देखने के लिए, सॉरी, दो पर्टिकुलर मैचेस देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. बट आई फील लाइक द फर्स्ट टू मैचेस में रियली क्विक 2-0 मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वन ऑफ द टीम्स माइट ब्रिंग इट डाउन टू अ थर्ड मैप, बट थर्ड मैप तो हमने देख लिया था स्काई प्लेटफॉर्म पिछले मैच में सेकंड मैप के हाथ में. बट आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ द टीम एंटीडोट वन इट. आई वाज एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग देम. मैं सोचा कि फॉर्मिक्स एक राउंड तो निकाल ही लेगा, उसके वजह से थर्ड मैप रह सकता है. एंड कैप्टन प्राइस, व्हाट आर योर थॉट्स? आई मीन मैंने सुना है कि काफी फेमस प्लेयर्स खेल रहे क्वालिफायर्स में हमारे फ्लिक्स में, जहाँ पे मैं ऑफ कोर्स मेंशन करनी चाहती हूँ स्वे और हमारा पैराडॉक्स. आई थिंक they are the spotlight of this event. I feel like that, spotlight of Flicks event, because it's not the first time they've done it. They've done previously. उन्होंने Valorant में भी काफी कोशिश किया था जब हम Red Bull के कर रहे थे. But now at this CS:GO, I feel like they are known in community from a long time, and they are also known as the Deadly Duo. Well, अगर आप बात करेंगे Sven Paradox की, well, I'm not gonna reveal any names because I think जनता को ऑलरेडी पता है. लाइक जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो ऑफकोर्स अपने दोस्तों को बताए होंगे कि या वी आर प्लेइंग द रेड बुल फ्लिक नेशनल फाइनल्स CS:GO. एंड अगर आप बात करेंगे वो दोस्तों को बताए हैं, उन दोस्तों को पता भी है. बट लाइक व्हेन आई यूज्ड टू प्ले बैक इन द ओल्ड डेज, वहां पर चल के ना व्हेन आई यूज्ड टू टेल माय फ्रेंड्स दैट या आई एम आल्सो प्लेइंग ऑन अ कंपेटिटिव लेवल, दे यूज्ड टू बी लाइक you can't play, bro, come on, you can't play there. So that I'll be giving them the opportunity to just what can I say, like do the same with their friends who are going to play up here today in the quarterfinals. But yeah, we are going to go into the quarterfinals in a short while. But before that, मैं कहना चाहूंगा कि हमने अभी तक के जो मैचेस देखे हैं, लाइक हम सोच रहे थे कि इट्स गोइंग टू बी द यूजुअल CS, like one trade or the other, but it has been on a totally different level. Like this is CS plus benefits, and that is exactly what we are getting. You get high up, you fly around, you get to the high grounds, you get your domination, you get your hard points held down, and that is what's happening at the Red Bull Flick. एट अ पॉइंट हम भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे कि कौन सा टीम जीतने वाला है, कौन सा राउंड कौन सा टीम जीतने वाला है. एट अ पॉइंट हमको भी लगा था कि दिस इज बियॉन्ड अ गेम विच वी यूजुअली सॉ. दिस इज समथिंग न्यू, a little more innovative, a little more creative with the responsibilities they've given. And I guess players भी थोड़े confused थे, but along with the rounds उन्होंने सीख लिया. They learn their way through the game. I think that's how you should do it. Like you should understand your opponents, you should improvise your strategies, and I believe based on today's afternoon, what we have seen in the first two games of the OG Reunite, जो फ्लिक के खिलाड़ी हैं जो तैयार है अभी क्वार्टर फाइनल्स खेलने के लिए, उन लोगों को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, एंड दे आर गेटिंग रेडी. ऑफ कोर्स वेनम सर ने यहाँ पे, वेनम जी ने यहाँ पे सब लोगों को कहा है कि ऑल द बेस्ट, लाइक मजा कीजिए, कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कंपटीशन पे भी जा रहे हैं, यू शुड हैव दैट फन. एंड अगर आप मजे के साथ कुछ गेम खेलते हैं देन डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छा हमें देखने का मौका मिलता है. बट टॉकिंग अबाउट द रेड बुल फ्लिक मैचेस, आई बिलीव बहुत मेहनत करके यहाँ पे खिलाड़ी यहाँ तक पहुंचे हैं, बिकॉज इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 4 क्वालिफायर्स मैच इन दैट सो मेनी प्लेयर्स हैव रजिस्टर्ड. एंड व्हेन it's a 2 versus 2, not the usual 5 versus 5 CS, then it's more number of teams playing. So you can imagine the thousands of teams that have actually registered in the 4 qualifiers, and here we are with the top 16 players of the top 8 teams.
and we are gonna have them play in the quarterfinals this afternoon. Yes, quarterfinals के लिए मैं काफी excited हूँ because it's gonna decide that who are those main players who will be moving forward to the semi-finale, and that semi-finale is gonna create even more hype. And ये 8 टीम जो आज यहाँ खड़े हैं और जो खेलने वाले हैं to represent themselves, it's just not about playing the game, it's about having the best partner in the game with you. जबकि हमने देखा है, आपको तो क्लियर आइडिया आ गया होगा कि कैसे खेला जाता है